પ્રાર્થના ને ગ્રીષ્મના લગ્ન થયા ને પછી ગ્રીષ્મા લગ્ન કરીને પછી અહીંયા આવી પછી પાર્થ આમ જવું સત્સંગ જોવે પછી બીજો ચાલુ કરી દે પછી જયારે કઈ પ્રશ્ન પૂછે તો ખબર ને એ બધાને અડધો કલાક તો એના જવાબ આપતા થાય જ કાં તો અમારે કશું થયું હોય તો એ થોડું વાત કરે લાંબી મને કહે છે કે મમ્મી મને ચિંતા થાય મેં કીધું તને ક્યાંની ચિંતા થાય મને કે આ ભાઈ તો આમ બિલકુલ આપતો પુત્ર જેવું કરે છે તો પછી આમનું શું થશે કે મને કે હજુ તો નવા આવેલા છે આ તો આમ કશું નહીં જયારે જોયું તો કઈ પણ પૂછે ને એમાં જ્ઞાન 5 આજ્ઞા આમ છે તેમ છે તો ના એવું કશું નહીં થતું મેં કીધું ના ના એ તો કરશે મને કે મને 2-3 દિવસથી કેવું તું પણ આજે તને કીધું કે આ તો બહુ સત્સંગ કરે છે આમ નવું જ મેરેજ થયું છે કે મેં કીધું કઈ નહીં એ તો કરશે ને જાતે તું ચિંતા કરીશ કીધું લાઈટ વાતો બી ના કરાય એવું થઈ ગયું આમ કોઈની લાઈટ વાતો કરીએ ને કે ને આવું કર્યું હા તો એ કોણ છે શુદ્ધાત્મા છે એ તારી કોણ છે તારી ફાઇલ છે આપણે કોણ જોવાનું અમારું જોવાનું સારું બંધ થઈને વાતો નહીં કરવી તારે તો વ્યવહારમાં જ્ઞાન પીરસી ચાલ તો દીક્ષિત પૂછી લે ડિફિકલ્ટી નહીં અત્યારે એટલે પ્રશ્ન નહીં આવે ડિફિકલ્ટી નથી એટલે હારા મારું કહેવાય હા એક તો બે રીતે ડિફિકલ્ટી ના હોય એક તો વ્યવસ્થિત સંજોગો સારા આવતા હોય ડિફિકલ્ટી ના હોય બીજું જે જ્ઞાની થઈ જાય ને એને કોઈ ડિફિકલ્ટી ના હોય કોઈ પ્રશ્ન ના બહુ સારી કોમેન્ટ જ્ઞાનીને પ્રોબ્લેમ જ ના હોય તું કહેતી હતી કે હું પૂછીશ પાર્થ પેલું ગાડીમાં વિધિ બોલવા ના પડતો તો તું કે હા એ તો અમે બધા છોકરાઓ બેંક ને જાસવડ ફરવા જઈએ છોકરાને મોટા અમે જઈએ ત્યારે તે કોક વખત અમે સવારે 4-5 વાગે ઉઠીને જતા રહીએ પછી સવારે ઘરમાં વિધિ ના બોલીએ ગાડીમાં બોલી દેવાનું તો હવે આમ અમારા આપતા પુત્ર ઘરમાં આવ્યો બીજું કશું કાઢ્યું કે વિધિ ના બોલાય ગાડી મેં કીધું કોને કીધું મેં કીધું ભરત કાકા કેશવમાં એવું કોઈને નહીં કીધું દાદા ભગવાનને કીધું છે કીધું સારું પણ હવે એવું કે આમ વિધિ ના બોલાય ગાડી એ વાત શું હતી કે તમે જયારે નિશ્ચય ચરણી કરતા હો ને ત્યારે ફૂલ જાગૃતિ હોય એ વખતે ફૂલ જાગ તમે નમસ્કાર થી બોલતા હો નવ કર્મો બોલતા હો ને ઝૂકવું આવી જાય તો ચાલે નવ કર્મ નમસ્કાર થી બોલતા હો ત્રિમંત્રો બોલતા હોય ઝૂકવું આવી જાય ચાલે પણ નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણ બધી સિદ્ધ સ્તુતિ કહેવાય સિદ્ધ સ્તુતિ આત્માના ગુણોની ભજના કહેવાય ને એટલે જયારે આત્માના ગુણની ભજના થતી હોય ત્યારે આપણે એકદમ ફૂલ્લી એલર્ટ હોવા જોઈએ એટલે એ રીતે ચાલે કે તારે કે આમ કે હલતા તમે કીર્તન ભક્તિ બોલતા હો ને તો આમ કે ઘરમાં કામ કરતા કરતા બોલ્યા તો ચાલે રસોઈ કરતા કરતા બોલો તો ચાલે પણ કે નિશ્ચય ચરણથી કરવી હોય તો કે બેસીને કરવી જોઈએ જે ડ્રાઈવર ચલાવતો હોય એને સાંભળ્યા કરવાનું જ્ઞાતા રસ્તા રહેવાનું બીજા બધા બોલી લેવાનું એટલે મેં એવું જ કીધું હું ગાડી ચલાવી લઉં તું શાંતિથી આંખ બંધ કરીને વિધિ બોલ કેમ કે હા બરાબર એવું મારો ચાલશે તો આજ કમાણી કે હું પછી બોલીશ એટલે હું સાંભળીશ એવું એટલે આ શું છે કે વાત પેલી પકડી જાય ને પકડવાનું શું હતું કે ક્યારેય પણ આ વિધિ બોલીએ ત્યારે આપણે એનું ફૂલ એલર્ટનેસ હોવી જોઈએ પેલો સવારે ઉઠીને પતા ઉઠીને બેસે વિધિ કાપે એમ ઝુકાવતા હોય તે નિશ્ચય વ્યવહાર ચરણથી એવું ના થવું જોઈએ ખ્યાલ આટલું સિમ્પલ બીજા બધામાં ચાલે એટલે પછી તમે ગાડી ચલાવો વાતો કરતા હો વાતો કરતા પછી ચરણવિધિ ચાલતી હોય પછી અંદર બે જણ વાતે કરતા હોય એ સારું નહીં પછી ચરણવિધિ કરે તો બધા જ ચરણવિધિ કરતા હોય ડ્રાઈવર ચલાવો તો મનમાં બોલ્યા કરે ને તો વ્યવસ્થિત તો એક અનુભવ કરે આંખો બંધ કરીને ચલાયા કરો એવી સ્પીડ એવું ના કરે કેવું છે દરેક વસ્તુમાં નોર્માલિટી જોઈએ
એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે નોર્માલિટી ઇઝ ધ એસેન્સ ઓફ લાઈફ. તો સામે વસ્તુની ઇમ્પોર્ટન્સ પણ હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? આ કોઈ લગ્ન હોય તો પછી સાદો ડ્રેસ પહેરી જાય ખરો? ગમે એવો સિમ્પલ હોય ને, ગાદીવાદી હોય તો એ સિમ્પલ ડ્રેસ પહેરી જાય? એ ના, એ દિવસે પહેરવો જ પડે ને. ખ્યાલ? નોર્મલમાં બધું જ ચાલે ને. એવું આ છે ને આપણું, આ સમથિંગ યુનિક છે નિશ્ચય વાચન વિધિ. એટલે એ વખતે બહારના સંચો એટલે તમે બેસીને બોલવાનું એવું નથી, બેસીને બોલવાનું એવું નથી કહેવા માંગે. દાદા શું કહેવા માંગે છે? પૂરી જાગૃતિ સાથે, વિથ ફૂલ એલર્ટનેસ. એ તો કોઈ એવા સંજોગ આવે તો શું થાય? ઘણા એવા હોય કે આમ બોમ્બેમાં હોય ને, ટ્રેનમાં જતા હોતા વિધિકલ, તો શું થાય? ટાઈમ જ ના મળતો હોય, પછી 12 વાગે ડેટ બદલાઈ જતો, બીજા દિવસમાં જતી રહે. દિવસે જ બોલે, જોબે જતા જતા જ બોલે. હા, પણ આ નિશ્ચય વાચન જાતે ચલાવો તો જોવે તો ના બોલ, પછી બેસી લે આવ ગાડી ચલાવતા તો બોલો ને, એ બરાબર. કારણ કે બધું વચ્ચે કેટલા બ્રેક આવી જાય ને, વચ્ચે આપણે બ્રેક મારી પડે. અંદર ટેપ ચાલુ કરે એટલે ખાલી બોલવાનું જ હોય તમારે. હા, પણ છતાંય એ ધ્યાન તમારું એ ઉપયોગ શબ્દોમાં ના હોય, ઉપયોગ બહાર રાખો ને કે ભાઈ આ સિગ્નલ આવ્યું, કે આ રેડ થયું, કે આ યલો થયું, આ યલો થયું, ત્યાં સુધી પહોંચશું કે નહીં પહોંચે, બધું અંદર ઉપયોગ એમાં જ જાય ને. એટલે એ વખતે નહીં, પછી એમાં નમસ્કાર નવ કર્મ બધું ચાલે. ખ્યાલ? દીક્ષિત ખ્યાલ? કોઈ પણ વસ્તુ આપણે બહારથી નથી પકડવાની. દાદા ભગવાન કોઈ પણ વસ્તુ કહે ને તો દાદા શું કહેવા માંગે છે, દાદાની દ્રષ્ટિ શું છે એ સમજવાનું. આપણે સ્થૂળમાં પકડી લઈએ કે દાદા ના પડે, દાદા આમ કહ્યું છે. મુખ્ય દાદા કહેવા શું માંગે છે કે તમે ફૂલ એલર્ટ હો, જાગ્રત હો, એ વખતે બોલો. ભાઈ બોડીમાં સુસ્તી હોય, ઊંઘ આવતી હોય, થાકેલા હોય, એ વખતે બોલો તો શું થાય? તો કે આ વસ્તુ તમારા આવરણ ખોલે છે. જે આવરણ ખોલનારી વસ્તુ હોય એ જ વખત તમે આમ જોકું મારો એટલે ઉપરથી આવરણ બધી જાય. એટલે આટલું જ છે. મને એવું લાઈક 12 કલાકની જોબ કરો ને, પછી ઘરે આવો તો પછી ટાઈમ ના મળે ને વિધિ બોલવાનો. એટલે 12 કલાકનો દિવસ હોય પણ એ તો ઇઝી 14-15 hour થઈ જાય. તો પછી હું ઘરે આવું તો મને અંદરથી પેલું ગિલ્ટી ફિલિંગ આવે કે મેં આજે વિધિ નહીં બોલી. પણ પછી મને ખબર છે કે હું વિધિ બોલીશ તો હું જોકા જ મારી. હા, એટલે પછી શું 12 કલાક ડ્યુટી હોય, આવે ઘરે સુઈને પછી ઉઠે પછી તો ફ્રેશ હોય ને, એ વખત તો પછી થોડું ટાઈમ ચોરી જતા હોવું જોઈએ. સ્કૂલમાં ચોરી જતા પેપરમાં અહીં ના કરતા, ઇન્ડિયામાં કરતા. એવું આપણને આ 24 કલાક છે ને, એમાં આપણા માટે જે કલાક 2 કલાક કાઢવાના ને, એટલી ચોરી કરતા ના આવડવું જોઈએ. ના આવડવું જોઈએ, માપે આવડવું જોઈએ. You must have time for your own, for your true self. તો કૃપા માટે ટાઈમ કઈ ના કરે, સ્ટડી માટે, એસાઇનમેન્ટ માટે, ખાવા માટે, પીવા માટે, સુવા માટે. એવું આપણે આપણા પોતાના માટે ટાઈમ કાઢવો પડે. બધાના માટે કાઢીએ ને તો એ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ કોઈ હિન્દુસ્તાન કોઈ કાઢે નહીં, તો કાઢી શકે. For you it is feasible. સમજે? કેટલાક ખબર? કૃપાનિષ્ઠા તો સાંજના આરતી બોલતા હોય છે ડેલી. આવું કે અને કારમાં સ્કૂલે મૂકવા જાય તો એ લોકો ત્રિમંત્ર ને આરતી બોલવાની ત્યાં સુધીમાં સ્કૂલ આવી જાય. એટલે એ વસ્તુ ડેલી આખું બંધમાં કરે છે. હા, તો પેલું મમ્મી બરાબર ના ચલાવતી, ના હું ચાલુ કે પપ્પા બરાબર ના ચલાવતો, એ લોકો ડેલી કરતા હોય. કોવિડ ચાલુ થયું ત્યાં પછી પેલું સવાર ઇન્ડિયા વિધિ સવાર ચાલુ કરે ને તો અહીંયા આગળ સાંજનો ટાઈમ ફિક્સ છે, એ ટાઈમે મૂકવાની અને આ બહેને બેસવાનું કમ્પલસરી. ના પણ સારું, આ લાગે આમ ઘણો ફાયદો થઈ ગયો. એમાં જ ગુજરાતી શીખ્યું બંને. ગુજરાતી તો આવડવું જ જોઈએ ને, લખતા વાંચતા આવડવું જોઈએ.
ભલે ધીરે ધીરે લખે કે વાંચે પણ આવડવું એ આપણી લેંગ્વેજ હોય ને તો જ આખું આપણું કલ્ચર સચવાય. મેં દાખલો આપ્યો હતો ને ત્યાં નાઇજીરિયામાં એક છોકરો હતો તામિલ એટલે તામિલ લેંગ્વેજ બોલે ત્યાં ઘરમાં. એટલે ઘરમાં મમ્મી પપ્પા બોલે એટલે એકદમ ફ્લુઅન્ટ બોલે. તો ઘરમાં પછી લખવા વાંચવાની પ્રેક્ટિસ ના કરવાની એટલે લખતાય ના આવડે ને વાંચતાય ના આવડે તો બોલે ફ્લુઅન્ટ કારણ ઘરમાં બધા બોલે. તો પછી તામિલનાડુ ગયો અને પછી એને થયું કે મારે ક્યાં સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટની બસ હોય ને એસટી બસમાં મારે જોવું છે અનુભવ કરવો છે. તો એની મમ્મી કે આપણે સાથે જઈએ. ના ના કે હું એકલો જઈશ કે મામાને ત્યાં એવું છે ને કે હું બસમાં બેસીને જઈશ કે અડધો કલાકમાં આવી જાય છે જઈશ. તો બાપુ તો બસ સ્ટેન્ડ પર પહોંચી ગયા કે બધા આપણું પેલું લખ્યું એમાં ને એટલે ખબર ના પડે શું લખ્યું છે. અમુક તો પેલું જલેબી જલેબી જેવું હોય ને વાંચતા આવડે નહીં એટલે એની બાજુમાં એક માજી ઉભા હતા. તો માજીને એને પછી એની જ ભાષામાં પૂછ્યું કે આ શું આ બસ પર શું આ બસ ક્યાં જવાની? તો પેલા માજીને ગુસ્સો આવી ગયો કે તું આટલો કે સુટેર બુટેર છે ભણેલો ગણેલો છે તો તારી જાતે વાંચે કે મને શું પૂછે છે? મને વાંચતા નથી આવડતું માને કે એટલે આવું એ થાય. साहब एमने इसको आप थोड़ा सा कुछ लाइक कर्मा थ्योरी का एक्सप्लेन कीजिए बिकॉज ही डजंट बिलीव इन दैट. उसको ऐसा लगता है कि हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसका कर्मा सेम कैसे हो सकता है. बराबर. सो और ऑल्सो पुनर्जन्म वगैरह में अगर उसको थोड़ा सा समझाए भाई अपना पुनर्जन्म जब भी हो तो अपना थोड़ा कर्मा लाइक सोच कुछ कोई लाइक गलत सी सोचना या फिर उसको कर देना वो दोनों अलग बात है. लाइक सोच के करना वो उसमें पाप लगते हैं. सोचना सोचने में जो सोचे ने सोचने में पाप नहीं है. चलो अभी रिलैक्स हो गया ना, सोचने में पाप नहीं है. ऐसे हाँ मैं सोचता नहीं ऐसे पूछ रहा. ना बराबर ऐसे बताओ सोचने में पाप नहीं है तो फिर करने में पाप है, करने में भी पाप नहीं है. Whatever you are thinking is not sin. Whatever you are doing is also not sin. actually he doesn't have the ability to forgive. તો અગર કોઈ એમને થોડુંક પણ ખોટું કરે ને એની જોડે તો એનાથી સહન નથી થતો અને માઇન્ડમાં જ બધું કરી દે. Reason is he is very pure. So pure person क्या है कि the person who is pure by heart, he can't tolerate anything impure. So he will lose his temper. ऐसा वो अच्छा भी है. अच्छा है बट वो इसलिए अच्छा है. लाइक थॉट्स में सब कुछ कर लेता है वो. तेरे को मम्मी पे गुस्सा करने का पापा पे करने का और बाहर वो पुलिस वाला पकड़े उसके ऊपर करने का, बाकी सब जगह ठीक होता है. क्या करता है तुमसे क्या पढ़ता है? 12th में है अभी. 12th में. तो आप यहाँ आए तो इंडिया से आए 2 साल से? तो पहले बॉम्बे में? नहीं गुजरात में थे हम लोग. लाइक पहले मैं तो राजस्थान से, जैसे आपको मालूम है मेरे डैड, फिर बाद में पंजाब, बाद में गुजरात और फिर गुजरात से. अच्छा. पंजाब अच्छा था गुजरात अच्छा था? क्या पंजाब अच्छा था कि गुजरात अच्छा था? और दोनों. हाँ. खाना पीना पंजाब में अच्छा था ना? नहीं गुजरात में गुजराती फूड ढोकला हाँ. ढोकला खमण थेपला और पंजाब में पनीर की सब्जी, साग, सरसों का साग. पंजाब मक्की की रोटी और सरसों की सब्जी. देखो अभी एक कर्म की बात करते हैं ना, तो कर्म जो है ना, भगवान महावीर ने भी कर्मों की बात बताई है और कृष्ण भगवान ने भी बताई है. क्या है? अभी वितरागों ने बताया और भगवान कृष्ण ने बताया, वैष्णव ने जो बताया, दोनों में फर्क नहीं है, मगर दोनों की दृष्टि में फर्क नहीं है. मगर लोग जो समझे वो पूरी दृष्टि चेंज होगी.
लोग जो समझो उसमें। क्या नाम आपका? अभिराज। अभिराज, अच्छा नाम है नहीं? यूनिक नाम होना चाहिए, अभिराज। तो अभिराज मैं क्या बता रहा हूं कि कर्म जो है ना, हम क्या समझते हैं कि पिछले जन्मों में हमने जो कर्म बनाए वो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं, पाप और पुण्य। और नियम ऐसा है कि अभी हम जो पाप और पुण्य एंजॉय कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उस समय साथ में साइमल्टेनियसली वी आर चार्जिंग न्यू कर्म। एक बैटरी जैसा है, वो बैटरी चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी होती है, ख्याल में? तो पिछले जन्म में हमने जो कर्म बनाए वो अभी जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, उनको कर्म फल बोलते हैं। वितरागुण उनको उदय कर्म बताया, उदय कर्म। और कस्तवा ने प्रारब्ध कर्म बताया। समझ आया इसी बात है? उदय कर्म। तो उदय कर्म है ऐसा हम बोलते हैं, उदय कर्म मगर समझते नहीं। आप आज सत्संग में आए, आपकी आने की इच्छा थी? हाँ। फिर अच्छा, जब अच्छी बात है। मुझे लगा आपकी इच्छा है वो भी लेके आइए। नहीं, इच्छा नहीं थी, बट जब मैंने उसको बोला ना कि कोई क्वेश्चन जो तेरा है, तो इफ यू डोंट बिलीव इन मी तो आप हमको क्या करते हो? बहुत दैट्स अच्छी व्हाई ही वाज इंटरेस्टेड। है ना, बहुत अच्छी बात। तुमको इतना भी हुआ ना कि मेरा क्वेश्चन है तो मैं जाके पूछ सकता हूँ, चलो इसके लिए भी जाना है। तो मेरा कहने का मतलब कितना है अभिराज? ये कर्म जो बनते हैं ना, वो कुछ सोचने से, कुछ करने से नहीं बनते। नए कर्म जो बनते हैं वो अज्ञानता की वजह से बनते हैं, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, not by action, or not by speech, or not by thoughts. Karmas are created only and only because of the ignorance. And which ignorance? Self-ignorance. You are not knowing your true self, that self-ignorance. Because of that self-ignorance, you are adding new karma at each and every moment. समझ में आए? सेल्फ इग्नोरेंस। तो अभिराज तो तेरा नाम है? हाँ। पक्का? पक्का। हाँ। तेरा नाम ही है ना? नाम। तू नहीं है ना? दोनों। पता नहीं? दोनों। दोनों? हाँ। अच्छा, दोनों कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं आपका एग्जाम्पल, ये आपका जैकेट है, तो आप क्या बोलेंगे? माई जैकेट, बराबर? तो माई जैकेट बोलेंगे ना, तो ये जैकेट तू है? जैकेट से आप अलग है ना? जैकेट और आप अलग है ना? हाँ। तो wherever we say my, all that my is different, is separate from I. मानो ये जब गलती रहा है तो क्या बोलेगा? माई हाउस। तेरी कार हुई, क्या बोले? माई कार, माई ड्रेस। तो वो सबसे तो अलग नहीं है? हाँ, सबसे अलग है। तो आई एंड माई तो दोनों अलग ही होते, कभी एक नहीं होते। समझ में ऐसी बात है? आई और माई अलग होते हैं। तो आई और माई अलग होते हैं, मैं तो बोले हम दोनों हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं आई भी हूं और माई भी हूं, तो गलती हो गई। क्या मैं आई भी हूं और माई भी हूं तो गलती हो गई। तो ये अज्ञानता किसको बोलते हैं कि अभिराज तेरा नाम है, मगर अभी तेरी मान्यता में, बिलीफ में क्या बैठ गया है कि मैं खुद अभिराज हूं। तो वो भ्रांति, दैट इग्नोरेंस, सेल्फ इग्नोरेंस मीन्स आप खुद जो है वो नहीं जानते हैं, और जो नहीं है वो मान के बैठ गए, उनको अज्ञान, अहंकार बोलते हैं। और अहंकार की वजह से नए कर्म बन रहे,
और भगवान महावीर थे, उनका अहंकार निकल गया, इसलिए वो सब विहार करते थे, सब कुछ करते थे, दिशा भी देते थे, फिर भी नए कर्म नहीं बनाते थे। दादा भगवान हो गए तो दादा भगवान को भी 1958 में जो ज्ञान प्रकाश हुआ तो उनका इगोइज्म निकल गया, उनके भीतर के भगवान जो प्रकट हो गए तो उनको रियलाइज हुआ कि रियली स्पीकिंग हु एम आई, एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम माइंड, स्पीच एंड बॉडी। तो क्या हुआ, आई एंड माई सेपरेट हो गया। तो आई एंड माई सेपरेट हो गया, इसका मतलब कि इग्नोरेंस चली गई, इग्नोरेंस, सेल्फ इग्नोरेंस, इगोइज्म चला गया। तो इगोइज्म चला गया, फिर नए कर्म नहीं बनते, फिर जो भी स्टॉक है ना वो खर्च करते जाने का, वो ऐसे करते करते सारा कर्म का स्टॉक खत्म हो गया तो लिबरेट हो जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं। इतना सिंपल है, समझ है। अभी तो यहाँ आया, वो क्या है, कर्म है, बराबर नहीं। मगर आप बोल रहे हो कि कर्म है या ये। हाँ, तो अभी सत्संग आया तो मम्मी लेके आई, मगर तू आया तो तू यहाँ आया, वो क्या है, मेरे सुबह क्या बोल, मेरे कर्म। मेरा कर्म। हाँ। नहीं, वो कर्म नहीं है, कर्म कहाँ है, जहां आपका कंट्रोल है ना वहां कर्म है, कर्म है, जहां आपका कंट्रोल है वहां कर्म है। आप तो जैन है ना, तो उसको मैं आपको क्या ज्यादा बताऊं, बराबर क्या तुम्हें क्या क्या है? હું જૈન છું બટ આઈ મીન માય હસબન્ડ ઇઝ અ सिख है, अच्छा अच्छा, मैं दोनों। आप दोनों। हाँ, तो तने ताकि के बात आप એટલે તને અમુક શબ્દો પડી ના છે, મને એમ કહેવા જૈન હોય એટલે બરાબર રીતે વાત કરવી, આવું બધે કીધું। तो गुरुद्वारा में जाता है, ऊपर लगा के जाता है, हाँ सुखमणि का पाठ करता है, हाँ कभी कभी जाता नहीं, कभी कभी क्या हर रोज नहीं जाएगा, कभी कभी जाएगा। हर रोज तो सिर्फ खाने का, पीने का, पढ़ने का, वो हर रोज करेगा, बाकी का सब कभी कभी करेंगे। सत्संग में भी ये लोग कभी कभी आते हैं, हर रोज नहीं। ये तो मैं 4-5 दिन से हर रोज आते हैं, तो नहीं आएंगे, हर रोज बुलाएंगे तो फिर बंद कर देंगे कंप्लीट, बराबर। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये कर्म की बात सिंपल भाषा में अभी मुझे ख्याल में आएगा, अभी आपको सिंपल भाषा में बता दूं। ये 2 शब्द है, एक कर्म और दूसरा कर्म फल। आपका ये जन्म हुआ ना, वो कर्म फल है। आप यहाँ आके बैठे हैं, वो कर्म फल है। कर्म फल मीन्स इफेक्ट एंड कर्म मीन्स कॉज। तो इस संसार में 2 चीज होती है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। So at present, whatever circumstances you are having, you are facing, all are effects. कॉजेस है वो पास्ट का है, पास्ट का। तो पास्ट का कॉजेज है, उनकी अभी इफेक्ट आती है, और इफेक्ट में यू विल गेट डिस्टर्ब, बराबर। इफेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन यू विल गेट डिस्टर्ब। कुछ अच्छा हुआ तो वो खुश आनंदी होगा, यू बी हैप्पी। मगर ये जो इफेक्ट है ना, उसमें क्या लगता है कि इफेक्ट मुझे हुई है, ये मुझे हुआ, इसकी वजह से वो जो इगोइज्म आया ना, वहां इसकी वजह से कर्म बनते हैं। तो आपको तो सिंपल कितना करने का,
अभी तो आराम से पढ़ाई करनी, मगर एक चीज का ध्यान रखने का, सिंपल एक चीज, वेरी सिंपल थिंग। सुबह में आप जब उठते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, तो भगवान को याद करके शक्ति मांग लेने का, ये प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो, इतनी 5 बार शक्ति मांग सकते हैं। सिंपल है। हाँ मैं आपको सिंपल ही देने वाला हूँ। डिफिकल्ट तो स्कूल में पढ़ता ही है। अभी स्कूल में जाने का, अभी स्कूल तो अभी पूरा हो जाए, कॉलेज में जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या पढ़ना है आगे, आगे क्या करना है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। और कौन सा? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, केमिकल? आगे नहीं खबर, कई टाइप में बोले। कोई बात नहीं, तो जो होना है सब हो जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि सुबह उठ के 5 बार शक्ति मांग देने का, और फिर भीतर डिटरमाइन कर, निश्चय करने का, यू टू रिजॉल्व विद इन, कि पूरे दिन में मुझे किसी को दुख देना नहीं है। इतना कर सकते हैं? हाँ। बराबर। फिर रोज रात को सो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले एक बार देख लेने का कि मैंने सुबह में उठकर 5 बार शक्ति मांगी और निश्चय भी किया, तय भी किया कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। फिर भी इट्स पॉसिबल दैट यू मे हर्ट समबडी अननोइंगली और इवन नोइंगली। बराबर, किसी को दुख हो जाता है। तो किसी को दुख हो गया तो उसके लिए क्या करने का आपको? और कुछ नहीं करने का। जिनको भी दुख हो गया, सबके भीतर भगवान तो है कि नहीं है? गॉड इज इन ऑल लिविंग बीइंग। सब जीव माता में भगवान है कि नहीं है? और टेररिस्ट में भी भगवान है कि नहीं है? और आपका कोई दुश्मन है, एनिमी है, उसमें भी भगवान है कि नहीं है? सब में। हाँ, सब में ना, बराबर, सब में। अरे वो मॉस्किटो आके काटता है, उसमें भी भगवान है कि नहीं है? भले काटता है पर भगवान तो है ना, भीतर तो भगवान है ना। तो बाहर का पैकिंग कैसा भी है, पर आफ्टर ऑल भीतर भगवान है। तो आपको क्या करने का? रात को जब सो जाते हैं देख लेने का कि जाने अनजाने में किसी को दुख हो गया मुझसे, तो उनके भीतर जो भगवान है ना, उनकी माफी मांग लेने का। इतना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बराबर, इतना कर लेना है। इतना करने से क्या होगा कि उधर कुदरत नोट कर लेगी कि अभिराज को किसी को दुख देने की इच्छा नहीं है, किसी को दुख देने की इच्छा नहीं है। तो रिटर्न में कुदरत आपको क्या देगी, कैसा संजोग देगी कि कोई आपको दुख नहीं देगा। और जब कोई आपको दुख नहीं देगा तो आपके पास क्या बचेगा? कोई दुख नहीं देगा तो सुख बचेगा। तो आपको सुखी होना है नहीं? हाँ। पक्का नहीं? पक्का। तो ये दादा भगवान का सुखी होने के लिए एक मास्टर की है, वो आपको मैंने दे दिया, आपको अभी करने का। ठीक। चलेगा नहीं इतना? हाँ। क्या आपका दूसरा प्रश्न क्या था? मैं भूल गया। ये rebirth। रीबर्थ है कि नहीं है? नहीं, आपको क्या लगता है कि नहीं है? 70% yes, 30%. હા હા બરાબર. હું તો બોલે એ માને છે કે નથી હોતું. જ્યારે એમની પપ્પા જોડે હોય તો એ કહે કે કાંઈ નથી હોતું એવું. પછી જ્યારે હું કહું ત્યારે થોડુંક થોડુંક માનવા માંડે. એ બરાબર. તો તમે આ ગુજરાતી બોલવાને સમજે? નહીં. Little bit. Little bit. पंजाबी आती है? पंजाबी, हिंदी, थोड़ी बहुत गुजराती और इंग्लिश. ભણેલું છે એક વર્ષ બટ ભૂલી ગઈ. रीबर्थ का बता दो. हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी सब लोग पुनर्जन्म में मानते हैं
वी डू बिलीव, मगर वी डोंट नो कि रीबर्थ कैसे है। इसलिए किसी को तो भीतर खड़ा होता है कि रीबर्थ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल डीप रूटेड विद इन पर्सन डू बिलीव कि रीबर्थ है, एंड इट्स ट्रू ऑल्सो। आपको कुछ गलत काम करना है, कुछ गलत काम करना है, नहीं इस बार कुछ गलत से कुछ संजोग आया, आपको किसी को मारने का हुआ, कुछ चोरी करने का हुआ, किसी को हर्ट करने का हुआ, तो आपको नहीं होगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि हम पुनर्जन्म में मानते हैं, तो हम जानते हैं कि अभी मैं जो करूंगा ना, फिर बाद में उनका रिजल्ट आएगा, मुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो ब्रेक लगती है। सो डीप रूटेड भीतर अंदर डीप रूटेड वी डू बिलीव कि पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म दादा बाबा ने कैसे बताया कि जगत जो चल रहा है ना, वो कॉजेस एंड इफेक्ट की साइकिल चल रही है। causes, then its effects, while enjoying effects, again adding new causes, then its effect, it causes, like that effect and causes and effect, वो साइकिल चल रही है। तो फिर हर जन्म में चलता रहता है। हाँ, हर जन्म में चल रहा है। जहां तक अहंकार है, अज्ञानता है, वहां तक। जो जन्म में अज्ञानता निकल गई, अहंकार निकल गया, फिर बाद में वो साइकिल ब्रेक हो जाती है। आपको इतना ध्यान में रखना कि साइकिल मुझे एक दिन ब्रेक करने का है, ये साइकिल मुझे एक दिन ब्रेक करने का, ऐसा रखना। ये गुरु नानक साहब ने भी ये जो सुखमणि साहब में वो आता है ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण चैप्टर आता है, आपको पता नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको सरप्राइज होगा। आपको लगता है कि पूरा दादा का वर्णन किया है, आपको ऐसा लगेगा कि दादा भगवान का वर्णन किया है कि ब्रह्म ज्ञानी कैसे होते हैं, क्योंकि मन वचन का ऐसे मुक्त होते हैं, देह के साथ रहते हुए देह में नहीं रहते, ऐसा लिखा बहुत कुछ बताया है। तो हमें लगता है ये तो कैसी बात कर रहे हैं, मगर शास्त्र में से उन्होंने गुण ऐसा क्या कि सब अच्छा जिनको जो लगा सब ले लिया। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा है कि रामायण में भी अच्छा लगा, महाभारत में भी लगा, कोई और धर्म में भी अच्छा लगा, सब ले लिया। तो ये आपको इतना ध्यान रखना, सुखी होना है तो एक चाबी मैंने दे दिया कि मन वचन का दुख लो और रात को माफी मांग के सो जाना, बराबर। तो वो प्रार्थना है ना, आपको भेज देंगे दिनेश भाई ना, शुद्धात्मा प्रत्ये प्रार्थना અને પેલી જે પ્રાર્થના વિધિ છે ને એમાંથી આ બુક મને મળશે એક હશે હશે પાતી છે હિન્દીમાં ના પણ એને હિન્દી આપી પડે ને ના એટલે બધું એ ત્રણે લેંગ્વેજ વાળી ઓહો બહુ સરસ આવું કે મને ખબર નથી ના એક જનરેટિવ આવ્યું છે બધું ગુજરાતી એ તો નિશ્ચયાચરણ વિધિ છે ને, બધા છે જ્ઞાન પછીની છે ને, જ્ઞાન પછીની છે ને, જ્ઞાન પછી ચરણ વિધિ આપણી હતી હા એ લાંબી ચરણ છે ના બધી છે એ બુકમાં છે ચરણ વિધિ કે નિશ્ચયાચરણ વિધિ? તો એ વ્હાઈટ બુક છે ને, હા વ્હાઈટ કલર વાળી ને, એ નિશ્ચયાચરણ વિધિ સમજ કઈ નહીં કઈ વાત તું બેસે વાત हाँ पूछो। गनी समझ आ गई आपने जो भी समझा, तो एक और बात पूछनी जो लाइक जब कोई भी गुरु लाइक भगवान की तरह लाइक बन जाता है तो उनके साथ बुरा क्यों होता है? जैसे कि लाइक अभी गुरु अर्जुन देव जी लाइक कोई गुरु थे, उनको लाइक तवे बैठा वो लाइक जैसे मेडिटेशन कर रहे थे, कोई और मेडिटेशन करता है पर उसके कान में कुछ लाइक बच्चे जैसे मस्ती करते हैं, लाइक जब भगवान बनते हैं बन रहे होते हैं तो ऐसा है। हिंदुस्तान में जो भगवान बनते हैं ना, हिंदुस्तान का नियम है कि भगवान कब बनते हैं? मार खा के भगवान बनते हैं, और ये गप पे जाएंगे तो मार के भगवान बन जाएंगे, सबको मार के भगवान हो जाएंगे। नहीं समझ? हिंदुस्तान में मार खा के आशीर्वाद देते तभी भगवान हो जाते हैं,
मार खाते जगत का जो मार मिलता है ना, वो मार खाते और ऊपर से आशीर्वाद देते, उनको ब्लेसिंग्स देते, तो फिर भीतर के भगवान खुले हो जाते। महादेव जी है, महादेव जी का क्या था, एक नहीं आ गया। अभिराज, शिव जी बोलते हैं, शिव जी को महादेव बोलते हैं, महादेव, देवों के देव महादेव, ऐसे सीरियल आते हैं। तो उनको महादेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुद्र का मंथन किया, समुद्र का चर्निंग किया, उसमें से जो जहर निकला, तो सब देव तो भाग गए, कभी क्या करेंगे, तो सबने जाके महादेव जी को दिया, तो महादेव जी ने फिर वो पी लिया और अपने कंठ में लटका के रख दिया, तो उनका कंठ है ना, उनका नेक ऐसा ब्लूस हो गया पॉइजन की वजह, ऐसा बोलते हैं। मगर सही में बात क्या है, महादेव जी का मतलब क्या है कि ये जगत आपको जो जहर देता है, सब लोग जहर नहीं देते आपको, कोई आपका अपमान करेगा, इंसल्ट करेगा, वो क्या हुआ, जहर हो गया। कोई आपको दुख देगा, कोई आपके साथ चीटिंग करेगा, वो सब जहर हो गया। कोई आपके ऊपर गुस्सा करेगा, वो भी जहर हो गया। तो ये जगत जो जहर हमें देता है, जो पॉइजन हमें देता है, उनका स्वीकार करने का, तो ऊपर से उनको आशीर्वाद देने का, तभी महादेव जी हो जाते। आई बात समझ? तो हिंदुस्तान में जो भगवान बनते हैं, वो मार खा के आशीर्वाद देते, तभी भगवान बनते। समझ गए? और मानो ये मुसलमान धर्म है, समझने के लिए, बाहर नहीं बोलने का। तो ये मोहम्मद पैगंबर थे, तो अभी सब उनको मोहम्मद पैगंबर तो एकदम वो पकड़ लेते, बोलते हैं पैगंबर, मगर भगवान की तरह मानते हैं। मगर वो पैगंबर कैसे बन गए? लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो क्या है, अरबस्तान में एक जगह से वो उनका एक सेठ था, तो वैसा वो कार्गो लेके जाते हैं ना, एक जगह से माल लेके बेचने के लिए दूसरी जगह पे, तो सेठ के वहां जॉब करते थे, तो वो साथ में जाते थे, आते थे सब। फिर वो सेठ मर गया, तो उसने फिर सेठ की जो पत्नी थी, उनके साथ शादी की। तो शादी की तो सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। फिर वो बिजनेस के लिए आना जाना पड़ता है, तो जब आते थे, तो ऐसा मक्का मदीना ऐसा होता रहता है ना, तो जब आते लोग उनको आने नहीं देते थे। तो उनके पैसे थे, उसने क्या किया, वो सैनिकों सब लेके गया और सबको मार करके फिर अपना वो किया। तो क्या बोलते हैं, बाहर कैसे मार के खुदा हो जाते हैं, वो हिंदुस्तान में मार खा के आशीर्वाद दे के खुदा बनते। आप उनका हिस्ट्री पढ़ेंगे ना गूगल में, तो पता चलेगा कैसा जाके फिर उसने वहां युद्ध किया, फिर सब कुछ जीत लिया, फिर बाद में सबको बताया कि ये अल्लाह का मुझे पैगाम है, आपको ये सब करने का है, इस तरह से है। तो एक समझने के लिए, मार खाने के बाद जब आशीर्वाद दे सकते हैं, तभी आपके भीतर रहे हुए राम, भीतर के भगवान प्रकट हो जाते। समझ आ गई बात? पुनर्जन्म की बात आपकी आती रहेगी कि वो समझ में आ गई? आ गई? अच्छा है। कॉज एंड इफेक्ट, इट्स अ साइंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो पास्ट बर्थ में हमने जो कॉज डाले थे, उनकी अभी इफेक्ट आ रही है, और अभी इफेक्ट भोगते समय दूसरे नए कॉज डालते रहते हैं, तो ऐसे वो साइकिल चलती रहती है। एंड व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, तो कॉज डालना बंद हो जाता है, तो सब कॉज खत्म हो गया, तो फिर मोक्ष में चले जाते हैं। इतनी सिंपल बात है, बराबर? मगर आपको अभी ये टाइम इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात, तो जब मुझे मिलेगा ना, ये सुबह की प्रार्थना और रात को माफी मांग के सो जाना, इतना करते रहना। क्योंकि आप अभी स्टडी करते हैं, देन यू विल गो इन, यू विल बिकम इंजीनियर, देन यू विल डू जॉब। ये सब कुछ तो करता है, करेगा क्यों? हैप्पीनेस के लिए। सिंपल बात है, हैप्पीनेस के लिए।
पढ़ाई क्यों करता है? हैप्पीनेस के लिए। मूवी देखने के लिए क्यों जाता है? हैप्पीनेस के लिए। घूमने के लिए क्यों जाता है? कैंपिंग में क्यों जाता है? हैप्पीनेस के लिए। तो तेरे को चाहिए क्या? हैप्पीनेस। भाई पास लोग बोलते हैं पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए ऐसा क्यों बोलते हैं? उनको ऐसा है कि पैसे में सुख है इसलिए। तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? हैप्पीनेस। ये दादा भगवान की जो प्रार्थना है ना, ये जो दादा ने सिंपल 2 चीज बताया है, वो आप करेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी। चलेगा? ये आपको मास्टर की दे दिया, आप करते रहना। और फिर कभी भी मैं मिलूंगा तो मैं पूछ लूंगा आपको कि आप करते कि नहीं करते। बराबर? तो करना जरूर। जिस दिन आप खाना भूल जाओ, इस दिन भूल जाना, चलेगा? कभी कभी खाना भूल जाते, बहुत काम है। तेरा तो ऐसा होता है 12? हाँ, भूल ही जाए कि याद तो रहे। પાછું લઈને તો આવી હતી 2 વખત ડબ્બો. नहीं, वो खाना है, वो टाइम नहीं मिलता। टाइम नहोતો એટલે. भूल नहीं जाती है, હમ. खाना भूल नहीं जाती है। क्या ना, जिस दिन आप खाना भूल जाओ उस दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, बाकी सब दिन कर देने का। अच्छा, हाँ, मतलब मैं आता हूँ, एवरी ईयर आता हूँ, कभी कभी साल में 2 बार भी आ जाता हूँ, विंटर में भी आ जाता हूँ। नेक्स्ट ईयर हाँ, तो आई विल चेक। ये आपको मैंने असाइनमेंट दिया, होमवर्क दिया, एंड आई विल चेक इट। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। તમે સારું કીધું. હા કઈ દે તમે સારું કીધું કે આમ દંડો ઉપર है नहीं, मैं तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ भाई, आऊंगा और चेक करूंगा। मुझे आपके पास कुछ चाहिए नहीं, आप हैप्पी हो इसके लिए होमवर्क देता हूँ, तो मुझे कंफर्म तो करना पड़ेगा कि आप हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे। સાહેબ અત્યારે જ્ઞાનવિધિ કરાવી હોય તો અને ઇન્ડિયામાં થશે? और इंडिया तो क्या है, जैसे हवा यहाँ कશું છે ને સંજોગ તો ત્યાં એક છે ને, તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો ત્યારે તો હિન્દી વાળા એક બે છે પેલા પદ્મા વાળા નહીં કરીએ તો તમારા બધા બે જાય સામાયિક થઈ જાય। ઓકે હા, શું શું લિસ્ટ બનાવો એટલે પછી પ્લાન કરી શકે। આમાં લિસ્ટ તો 2 કે 3 જણ હોય ને એટલે થઈ તૈયાર ઉત્સુક કોણ છે એમાં કોઈ ભાવના જ હોય। તો પેલા આવેલા ને પદ્મા ને પેલા માગી બેઠા પદ્મા પાસે, તો બે આ હિન્દી વાળે પેલા હિન્દી વાળે, આપ તમે બધા તો હિન્દી આવડતા છે ને, प्रॉब्लम आता है रिश्ता क्या आता है आता है आवड़ता है। हिंदी हिंदी आती आता है। આતી હે અચ્છા આતી હે हाँ। બરાબર હા, લેંગ્વેજ આ તો મને આવડતા છે એટલે કહું છું। નો ગુજરાતી સ્કૂલમાં પણ આમ બોલચાલનું ટીચર हिंदी सब्जेक्ट ગુજરાતી સ્કૂલમાં ગુજરાતી હોય, બટ હિન્દી સબ્જેક્ટ હોય છે ખાલી हिंदी सब्जेक्ट હોય એટલે हिंदी આવડે અને movies ના तो क्या 4th 5th स्टैंडर्ड से एक सब्जेक्ट पहले सिर्फ गुजराती रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, और फिर 10th से पास ही होने गए, मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। और बाहर माहौल पूरा होता है गुजराती का, इसलिए मुझे भी पहले हिंदी नहीं आता था। फिर यहाँ सब बाहर निकला ना, 92 से बाहर निकला तो सब धीरे धीरे सीख गए, संजोगों ने सिखा दिया। ત્યાં જો નાઇજીરિયા એટલે ત્યાં બધા સિંધી ને બધા હોય, પંજાબી, રાજસ્થાની, तो પછી सीखी गए। तो ये और बोलता હતો भाई मुझे हिंदी नहीं आता है, तो नहीं आता है, नहीं आती है। अब हम बोलो गुजराती में बोले व्यक्ति कैसा है, तो एक्चुअली हिंदी में व्यक्ति कैसी है, अरे व्यक्ति आ व्यक्ति केवी છે બોલે આપણે, तो ऐसा नहीं, व्यक्ति कैसा है। तो गुजराती में स्त्रीलिंग है और हिंदी में पुल्लिंग है। तो फिर क्या है, सबसे बात करते करते सीख जाते। मार खाई के नहीं सीखे ना, कृष्ण એવું છે। અમે બધા ઇન્ડિયાથી નવા નવા આયા, પારુબેન ને અમે બધા, તો પેલું ડ્રાઇવિંગ નું એક્ઝામ આપવા જઈએ ને,
તો મને એમ કે ઇંગ્લિશમાં પૂછે ને તો કશું આવડે ને આપણે હિન્દીમાં આપવાની, હિન્દીમાં જલ્દી આવડે. ઇંગ્લિશ પછી બહુ આવડતું નહીં. પછી આપી 2-4 જણે હિન્દીમાં, હો. તે દાએ બાએ એવું કરી બધા હું નપાસતે આપણે કદાચ ઇંગ્લિશ થોડું આવડતું દાડે હું હતું બારે હું તો મારે ના ઘર એવા હોય કે ગુજરાતી હોય ને જમીને ડાબી કે ના ખબર પડે, પડી જાય. ઇંગ્લિશમાં બધા પાસ થઈ ગયા, પણ હિન્દીમાં તો પાસ થાય. આપણે હું તમે ઇન્ડિયાથી આવ્યો તો હિન્દી સારું કહેવાય, ઇંગ્લિશ તો ખબર નહીં પૂછે. તમારું નામ શું? બધી સફળતા આપ તો ભેગા હતા ને સત્સંગમાં કે? હું તો બધી જગ્યાએ પાપાની જોડે આવતી જ હતી. આ ગીસુમલના ભાઈના દીકરી છે. આ મને મળ્યા હતા તમારા પપ્પા મમ્મી, ઓકે. એ વાત થઈ હતી મારે. હા, પણ પછી એમાં ફોન બંધ થઈ ગયો ને એટલે નંબર ના ફોન થયો મારે. કઈક કહ્યું તું મને ચરણ વિધિ આપવાની. હા. હા, બરાબર. આ વખતે એમના પપ્પા સાથે હતા ને તો સફળતા બોલ્યા ને એટલે ખબર પડી, એમને સફળતા જ નામ કહ્યું તું મને. મંદિરમાં વિધિમાં સાથે હતા ને તો આપણે હા, વિધિ એમને પપ્પાએ કરાવી હતી, 9 અંગોની પૂજા. આવતા વર્ષે એમની જ છે ને પછી અચ્છા, એમ? પપ્પા છે ને શ્રીમંત જન્મ કલ્યાણ ના, પ્રભુ કાકા છે. તમારો છે, તમારા જોડે જોઈન્ટ છે એવું કઈક છે. પ્રભુ કાકા કે આ મોરબી વાળા એક બુક કરાયું, જન્મ કલ્યાણ. એવું? હા, એવું મને ખબર છે, પછી ખબર નહીં ફેરફાર થયો હોય તો. ના ગીસુમલ કે એ ગ્રુપ ના, શું ભરતભાઈ મિનેશભાઈ જન્મ કલ્યાણ સિમંદર સાહેબ એમને બુક કરાવેલું છે. તમારો છે? ભરતાનંદજી અમારે કરાવો છે. આવતા ખાલી જતો એના પછી પેલું નાખી દઉં કઈ તમરું ચાલો. અચ્છા, આ મમ્મીને પેલું એમની હાજરીમાં જેટલું થાય એટલું સારું. બરાબર. એટલે પછી આના પારસ પર કે ગીસુલા કે કોઈ આવ્યા હતા હા. મિનેશને કહેવા માટે કે ભાઈ મને તમારી સાથે રાખજો. કિશોરાજ તો નથી ને. ના એટલે ગીસુલાજી ગ્રુપ મને તો શું પેલો પહેલા ગીસુલા જોયેલા ને દારબાની હાજરીમાં એટલે એ પેલા ત્યાં જતો ને એ યાદ એટલે હું આખું આ બધા નામ પછી યાદ ના આવે પણ પછી ગીસુલા વાળું ગ્રુપ એવું જ મને અંદર ફિટ થઈ ગયું. ભરતાનંદજી અમને બી જોડાઈ દેજો. હા. મારે નારો ને મારી ઈચ્છા. હા તો શું વાંધો નહીં. બરાબર તો મોઢેથી બોલો. बात नहीं है सर गैलरी में होता है નહીં. जो नहीं बोलूं और मैं मंगलवार को आऊंगा बुधवार और गुरुवार 2 दिन है वो 2 में से एक दिन में हो सकता है ठीक है. तो दोनों के लिए ओके जी, मंगलवार को मैं लेके आ जाऊंगी. नहीं मंगलवार को नहीं नहीं. बुध और गुरु ओके. तो यू गुरुवार फ्री ऑन वेडनेसडे और थर्सडे इवनिंग टाइम Oh, yeah. फ्री है Yeah. हाँ आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बन गया है मम्मी बोलती है कोई बात नहीं कितना सीधा है कोई बात नहीं वैसे जो क्या प्रोग्राम है बताओ आपको मैंने जो बात की ना आपसे कि अभिराज तो आपका नाम है आप खुद कौन है तो आप खुद कौन है वो जानना पड़ेगा ना तो खुद को पहचानने का एक बहुत अच्छा प्रयोग है तो उसके लिए तो 2-2.5 घंटा चला जाएगा बैठ पाएगा इतना कोशिश तो शॉर्ट पेन का आना है वो आराम से बैठ सके कोशिश नहीं कोशिश है हाँ या ना बोलने का हाँ कोशिश बोलेगा ना तो एक रास्ता रखेगा खुला एक दरवाजा खुला रखेगा अब बोलने का नहीं हाँ बैठ पाऊंगा क्यों नहीं बैठ पाया अभी तो इतना यंग है हाँ मैं बैठ पाऊंगा तो आप नहीं बैठ पाएंगे हाँ, तू नीचे बैठे मैं ऊपर बैठे इतना ही फर्क है तू भी आलती पालती मार के बैठे मैं भी ऐसा बैठा हूँ मैं आपको पद्मासन का तो बोलता नहीं तो पद्मासन लगा के बैठू तो आपको बोलना पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा ओके मेरे पास हो जाए समझ मैं आपको डांटता नहीं हूँ एक समझने के लिए कैसा हमें स्ट्रांग होना चाहिए कि करना है तो हाँ करना है किसे बोल वॉक करने के लिए जाना है तो मैं बोला हाँ मैं कोशिश करूंगा तो क्या होगा हाँ वो लिंगरिंग होगा और मैं बोलूँ हाँ हाँ मुझे आना ही है तो क्या होगा तो भीतर भी अंदर ऐसा हो जाता है नहीं जाना ऐसा ये देखते हैं उनको पूछ लेना पद्मा को भी અને પેલા અમને કહી દેજો આ કપૂરબેન અને ગ્રુપમાં
ક્રિસ્મસ પણ આઈ થિંક હિન્દી હા, હા, હા એ લોકોને તમે ક્યારે કરવાના? ગુરુવાર ના, બુધવારે બુધવાર ને બુધવાર. બુધવારે છે. No, both Guru Shukra is going from his office. ના તો વાંધો નહીં. તારે જવાના? હા ના એક ઓનર જવાની સો ઓનર ના બિહાફમાં એક પેલા બે જણ એક રિસેપ્શનિસ્ટ છે અને બીજી અકાઉન્ટ પેએબલ એન્ડ રિસીવેબલ અટેન્ડ કરે તો ઓફિસ બંધ કેટલા વાગે થાય? ઓફિસ બંધ 5 વાગે હા તો 5 વાગે પછી આવી શકે ને સીધી? પૂછી જોઈશ હા એને ઈચ્છા હોય તો આવી શકે ને એવી. તો પછી આ બાજુ જ રાખી દેવાય. પેલી પદ્માની માજી કે કઈ બાજુ હોય? નોર્થ સાઈડ મારે છે નાક શું કે આ સાઉથ કે? આ હા, સાઉથ સાઈડ સાઉથ છે. છે નોર્થ એટલે ગાડી લઈને અડધો કલાક તો આવી જાય અમારું નોર્થ વેસ્ટ છે એટલે અમારું ઘર વચ્ચે પડે બધા સાઉથ બેઝ છે જોઈ લેજે જે પ્રેક્ટિકલ થાય તો. કારણ કે બધા 4-5 વાગે છૂટે ને. બધા આવતા 1 કલાક લાગે પાછું. અડધો કલાક ચાલી જાય 5:30 જાય આજુબાજુ ये तो जिनको ज्ञान देने का है वो 5:30 बजे 5:30 बजे शुरू कर देंगे बट इफ यू कैन कम लिटिल अर्ली डोंट वेस्ट योर टाइम वेडनेसडे को करते हैं ठीक बराबर है ये मम्मी की वजह से मम्मी बोलती है इसके लिए मैं तो आप कौन से देश लेके जाते हो ज्ञान देने कौन से देश आते हैं कौन से देश काउंट करना पड़ेगा तो बहुत सारे हो जाते हैं काउंट करो चलो नाइजीरिया टोगो बेनिन गाना आइवरी कोस्ट साउथ अफ्रीका बोत्सवाना जाम्बिया जिम्बाब्वे युगांडा केनिया टांजानिया मैं भूल जाऊंगा अभी दुबई इथोपिया इजिप्ट फिर ये यूके जर्मनी स्विट्जरलैंड फ्रांस नेदरलैंड बेल्जियम स्पेन यूएसए पूरा मैं वो अपने साथ तो गया ही नहीं हूँ वो लोग बहुत टाइम से पीछे वही जाता ही नहीं हूँ तो मुझे डर लगता है कितना किससे डर लगता फिर दूसरे जा नहीं सकता तो मेरी मेहनत निकल ही जाती है मैं पक्का बिजनेसमैन हूँ आउटपुट आना चाहिए तो इतना ही करता हूँ जहाँ आउटपुट नहीं उधर ध्यान नहीं देता આવું જવું જોઈએ બધાને જ્યાં આઉટપુટ હોય ત્યાં તે જ કામ કરવું તમારે કરવું જ પડે એ રીતે કે આઉટપુટ આવે પછી યુ આર જસ્ટ વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ है मैं नाइजीरिया 92 से एवरी ईयर जाता हूँ वहां कोई नहीं जाए क्यों मगर आपने ऐसा पूछा कौन से देश में जाते लाइक मम्मी बोलो कि आप लाइक यूएसए से यहाँ आए और फिर लाइक इंडिया से यूएसए से मैं बोलता कौन सा वाला देश अच्छा हुआ मैं तो मुझे 2 ही बोलने का था यूएस और कनाडा बहुत सारे किस्से और आप प्रस्ताव भी आपने पहली बार मुझे कोई किस्सा ऐसा प्रस्ताव भी आप करेंगे સાહેબ જે કોઈનો ક્વેશ્ચન ના હોય તો તમે થોડુંક આરતીમાં જે ભાવ છે થોડુંક સમજાવો ને કે ત્યારથી તો કરીએ પર એક્ઝેક્ટ ભાવ મને અંજુ વાત કરી ઓકે હા પીપલ સાઉથ ના ના ખાલી ભવન ના ના હું આવી એ કરવાનું હા તો तो अभिराज इतना रखना वेडनेसडे है ना आपको एक राइट विजन मिलेगी उस दिन करेक्ट विजन और हम संसार में भटकते हैं ना राइट विजन नहीं होने की वजह से भटकते हैं हम संसार में जो दुखी है वो राइट विजन नहीं होने से दुखी है तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस के लिए एक करेक्ट विजन मिल जाएगी उससे
अभी आपकी विजन कैसी है? बाहर की ओर है, बाहर की ओर मीन्स एक्सट्रोवर्ट। तो बाहर तो क्या है, आपको सब बाहर का सब मटेरियल दिखाई देगा ना, ये आंखें दिखाई देगा, सब मकान दिखाई देगा, अच्छा फर्नीचर दिखाई देगा, अच्छा टीवी दिखाई देगा, अच्छी कार दिखाई देगी। तो बाहर सब when your dusty is extrovert you can see materials, और मटेरियल को देखते देखते भीतर एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि ये मटेरियल मुझे सुख देगा, ये मटेरियल सुख देगा। फिर भीतर इच्छा है सुख की, तो फिर वो मटेरियल के पीछे भागेगा, समझे? बट आफ्टर ऑल ये दुनिया का कोई भी मटेरियल आपको सुख नहीं दे सकता है, समझता है इस बात? आपको ये ब्लैक जैकेट पसंद है, आपको ब्लैक जैकेट दिया तो आपको अच्छा लगेगा, और आपको उसकी जगह ब्राउन दे दिया तो हाँ, समझ रहे? वो ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, फिर भी आपको मजा नहीं आएगी। क्यों? तो कि आपकी दृष्टि में क्या है, आपकी दृष्टि बहिर्मुखी है, तो आपको है कि ब्राउन में मजा नहीं है, ब्लैक चाहिए। तो जब ये दृष्टि जो बाहर की ओर है वो 180 डिग्री टर्न होके भीतर की ओर हो जाती है, तो उनको अपना खुद का जो परमानेंट हैप्पीनेस है उनका अनुभव होता है, परमानेंट हैप्पीनेस। एंड ऑल दिस आउटसाइड इज टेम्पररी हैप्पीनेस, ऑल मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इज टेम्पररी, समझ में? तो ये पाने के लिए ये प्रयोग है, इसके लिए आपको आने का है, तो तैयार होके आना है सब बराबर। हाँ, नहा धो के सब तैयार होके आना, फ्रेश होके। लाइटली बोल रहा हूँ, नहा धो के आना। हाँ चलो, तुम्हारा सुपद कुत्ता था आरती। શું છે આરતી? आरती જે છે ને, हम ये जो भगवान की आरती करते हैं ना, तो भगवान की जो आरती करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारा ये कल्चर है, हमारे धर्म में बताया कि हम भगवान की आरती करते हैं। फिर वो जैन भी है, हिंदू भी है, करते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम तो नहीं करते। तो हम आरती क्यों करते हैं कि जब आरती करते तो सामने जो मूर्ति है तो हमें क्या है कि ये भगवान है, और भगवान है ऐसे हृदय में ऐसे भाव है, और फिर हम आरती करते हैं, आरती। तो ये जो रति है ना, रति विरति सब तो सुना है ना आपने, जैन तो आपने सुना होगा, रति विरति। रति मीन्स ये सब एक्शन है, उनको रति बोलते हैं, नॉर्मल एक्शन है उनको रति बोलते हैं। और विरति मीन्स सब एक्शन है मगर एक्शन में खुद नहीं है, तभी उनको विरति बोलते हैं। क्रिया हो रही है वह क्रिया के हम करने वाले नहीं रहे तो उनको विरति बोलते हैं। तो ये भगवान की आरती करते हैं ना, तो भगवान की दशा कैसी है कि भगवान को विरति हो गई है। भगवान की सब क्रिया होती है, भगवान महावीर है कि भगवान राम है तो ऐसा वनवास में जाएंगे, युद्ध लड़ेंगे, भगवान महावीर है तो विहार करेंगे, दिशा देंगे, सब क्रिया है ना, क्रिया सब है, पर कोई क्रिया में क्रिया करने वाले नहीं है, इसलिए उनको सब क्रिया में विरति है। तो आरती क्या, ये रति और आरती में विशेष रूप से जो रति में से जो नेगेटिव में से पॉजिटिव होके आगे बढ़ने का है। फर्स्ट है भाई नेगेटिव में से पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव में से आगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से पर होने का है, गोइंग बियॉन्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये एक स्टेप है आरती। तो जनरली क्या करते हैं कि भगवान है और भगवान इससे मुक्त है और भगवान की आरती करते हैं, तो मुझे भी भगवान जैसा होना है, उनका जागृति में आता है। और फिर
ये आरती के जो सब स्टेंजा बोलते हैं ना, तो उसमें सब लक्षण का वर्णन किया है, कैसा केवल ज्ञान केवल दर्शन। उनको भीतर भाव खड़े होते हैं कि मुझे ऐसा केवल दर्शन होना चाहिए, मुझे ऐसा केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे ऐसे पंच परमेश्वरी पद की प्राप्ति करनी है। तो ये जो भावना होती है केवल मोक्ष लहे, तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ये भावना खड़ी हो जाती है। और दूसरा क्या है, जब आरती करते सब काम छोड़ के आरती करते हैं, आरती के लिए जाएंगे सब काम छोड़ के, तो आपका वो चित्त भी उधर एकाग्र रहेगा। वो एकाग्रता के साथ ये भावना की, उनका फल कितना बढ़ाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये आरती ये सब है ना, वो कुछ बोलते हैं ना कि कभी कोई सब होता भी, ये करो ये कोई सब नियम देते हैं, ये रिचुअल्स नहीं है अपना। दादा भगवान की जो बात है ना, तो दादा भगवान ने हमें जो दिया है कि त्रिमंत्र बोलना, नमस्कार विधि करना, नौ कलम करना, तो दादा भगवान के समय में, शुरुआत के समय में तो सुबह में भी आरती करते हैं। सब महात्मा अपने घर पे सुबह में भी आरती करते, शाम को भी आरती करते। मैं 75 पहले की बात करूँ, और दादा बोलते थे कि जो घर पे आरती होती है वहां हमारी और सभी देवी देवताओं की प्रेजेंस रहती है। तो भगवान दादा भगवान की और देवी देवताओं की प्रेजेंस रहती है, तो फिर वहां स्मूथली सब चलता है। ऐसा है। और बाद में, पहले तो एवरी सत्संग के बाद आरती होती थी, सत्संग पूरा हो गया, लास्ट में आरती होती थी। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, इतना टाइम भी नहीं रहता था। फिर धीरे धीरे आरती बंद हुई, फिर से कीर्तन होती रही। मगर वो भी आरती करते थे तो दीवो एक दीवो बे सब करते थे। तो महात्माओं का भी ऐसा नहीं होता था कि इतनी लंबी आरती करो, दादाजी की बात सुने, पानी सुने। सबको ऐसा ही लगता है दादा है। फिर बाद में सिमरन स्वामी की आरती तो बहुत बाद में, पहले से नहीं थी। फिर आरती में लास्ट में तो ज्ञानांजन के समय वो थाली में फ्लावर्स का वो पेटल सब रखते थे, फूल पत्ती। तो अभी तो क्या है, दादाजी का क्या था वो बता रहा हूँ। दादा ऐसे बैठते हैं, सब लोग आरती उतारते थे कि वो सब चलते हैं, उस समय वो हाथ में लेकर ऐसा करते थे। दादाजी क्या बताते थे कि ये जो फ्लावर्स है ना, हम देवी देवताओं को अर्पण करते हैं और बाद में आपके ऊपर डालते हैं। इससे क्या होता है कि आपको संसार में जो विघ्न आते हैं वो सब से मुक्त होते हैं। अभी ये बात, ये दादा की विधि थी ना, और हम तो ये सब पता है, हम तो क्या भगवान के पास जाके डाल के फिर डाल देते हैं। एक क्रिया रहेगी, मगर क्रिया के पीछे दादा का जो आशय था, तो दादा क्या बोले, ये जो आपके ऊपर डाला है ना, वो देवी देवताओं की प्रसादी है, और जिससे आपका ये सब बाहर का व्यवहार स्मूथली चलता रहेगा। और दादा तो कहाँ तक सब महात्मा के पास जाके सब के बुलाएंगे। फिर बाद में हमारे जैसे कोई आसपास में हमको दे देते, हम जाके डालते थे। तो हमें कुछ पता नहीं था, दादा का नकल ही करेगा, कॉपी करने का, जाके सबके ऊपर डाल दिया। मगर ये दादा की दशा और दादा का जो अंदर विजन है वो, तो अभी कोई बात नहीं, तो अभी फंस गया, वेनस लिखवाने का है, फंस गया, अभी निकल नहीं पाएगा। ठीक, हाँ ठीक है ना। अच्छा, ये फंसने की जगह है, यहाँ जितने भी लोग फंसे ना निकल नहीं सकते। अभी आप अभी भी सोच लेना, बराबर है? हाँ, तो ये भी आप देखो, उनको अनुभव है क्या, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं, या इतना आनंद आता फिर निकलने का मन नहीं होता है। तो अभी भी सोच लेना, तो एक बार आया ना फिर निकल नहीं पाएगा। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, तो आप खुद नहीं निकल पाएंगे। એમના પપ્પા તો એવું કહેતા હતા કે દાદા ભગવાન અમારા ઘરે આવતા હતા. हाँ, કેમ કે મારા દાदा અચ્છા. ત્યાં જતા હતા.
हाँ, एक एक अवारनवार आता था। और कितने घंटे बैठ? 2 घंटे। ठीक, कोई बात नहीं। कुछ ज्यादा आदमी होता है 2.5 घंटा होगा मैक्सिमम। सब चलेगा। चलो, बीच में आप आओ, ऐसा करना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वो ठीक है। हाँ, और बस लगा के बैठे तो भी प्रॉब्लम। हाँ फिर ठीक है। हाँ, प्लीज। मैं तो आप लगाएंगे तो मैं लगा दूंगा। आप जितना बैठेंगे 1 घंटा, मैं भी 1 घंटा बैठूंगा। ठीक है। हाँ, ये परमात्मा ऐसा अच्छी तरह बैठ सकते हैं तो जागृत रहते हैं। अभी सबकी वो कैपेसिटी सबको मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं तो आएंगे नहीं, तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? एक और क्वेश्चन था। हाँ, क्या लाइक जो देवी देवता होते हैं उनको क्या इंसान बनना होता है? लाइक उनको लगता है कि इंसान बनना है? देवी देवता है ना, हाँ वो इंसान में से ही देवी देवता में गए। इंसान में जब है तब बहुत अच्छे बहुत पुण्य किया, तो ज्यादा पुण्य हुआ, फिर देवगति में जाते। फिर देवगति में जाके क्या है, वो खर्च करते पुण्य खर्च होता जाता है ना, तो पुण्य खर्च हो गए, फिर वापिस मनुष्य वापिस आना पड़ता है। देवी देवता को भावना रहती है, क्योंकि देवगति में से उनको मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है, मगर मनुष्य में आना पड़ता है। देवगति में रहकर देखते हैं कि अरे एक ज्ञानी पुरुष है, वो इतना ऐसा स्कोप है, तुमको लगता है कि अभी तुमका आयुष्य कर्म निकल नहीं सकते वहां से, और देव के रूप में यहाँ आके बैठते तो ज्ञान नहीं होता है। देव आके ज्ञान दे तो उनको ज्ञान नहीं होता है, मनुष्य के रूप में ही होता है। કે આપણે કઈ પ્રમોશન નથી થતી એમને દેવગતિમાં બરોબર देवगति में सिर्फ सुख है, हाँ मगर देवगति से मुक्ति नहीं है। पर ज्ञान का प्रमोशन नहीं होता है उनको समझ में आता है कि ये भगवान है, कि तीर्थंकर भगवान है, मोक्ष मार्ग खुला है, उनकी खुद की भावना थी मुझे प्राप्त हो जाए, मगर उनका जो उपादान है वही का वही रहता है, उपादान बढ़ता नहीं। तो कोई बात नहीं, आ जाना, पक्का रखना, चेंज मत करना, तेरे लिए रख रहा हूँ, ये मेरा एक सत्संग चला जाएगा। हाँ बराबर, आओ जाओ बेटा। टाइम क्या? टाइम शाम को 5:30, यू ट्राई योर बेस्ट। 5:30 आ जाए तो अच्छा है, तुम्हें अदरवाइज आई विल वेट फॉर, नो आई विल डिसाइड द प्लेस। इनको पूछना पड़ेगा घर वाले घर वाले बोले हम जॉब पर है तो भाई क्या करूंगा, यहाँ के सब मुझे करना पड़ेगा। प्लेस तो यहाँ क्या 10-15 मिनट के ट्रैवल, ये 3 मिनट में आ गए, तो उससे 15 तो 20 मिनट होगी, तो इतना तो कर सकते हैं। फंसता है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। ठीक, अच्छा है ना, सीधा है। हाँ એમ તો મનથી તો સાફ हाँ बहुत सोच, ગુસ્સો કંટ્રોલ નથી થતો જ્યારે આવે ત્યારે हाँ ये तो समझिए, गुस्सा इसलिए कंट्रोल है, वो प्योर है ना, हाँ हाँ बाय हार्ट ही इज प्योर। तो जो दिल से सही है ना, उनको ऐसा कोई गलत करे तो उनको सहन नहीं होगा, और दिल का वो थोड़ा पहला है ना, तो कुछ दूसरा भी गलत कर रहा है तो चलेगा। જે ચોખ્ખો હોય ને એનાથી સહન ના થાય, એટલે એને ક્રોધ આવી જાય, એટલે હા મેં એકદમ બેઠી, એટલે એ ગુસ્સા વાળા ચોખ્ખા હોય। હા બધાને એક્સક્યુઝ મળી ગયું, બધાને એક્સક્યુઝ મળી ગયું ગુસ્સો કરવા માટે। જેને જેને આવતે બધા એકબીજા બાજુ જોવા માંડ્યા, કૃપા નિષ્ઠા બાજુ, કૃપા નિષ્ઠાનો આમ નિષ્ઠા જોતી નહીં આવે, અને જે તો જોતી ને આપણે જો કે કામ એટલે અને આવે ગુસ્સો પણ એ કરી ના શકે મેં તો બતાવ્યો એટલે આ તો આમ સામાન્ય એક નિયમ બતાવ્યો, પછી બીજા બધા જે ગુસ્સા આવે ને પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે આવે, પોતાના લોભનું રક્ષણ કરવા માટે, પોતાના માનનું રક્ષણ કરવા માટે, એ આખી જુદી વાત છે। आज છોકરાઓ ને ये बच्चों को ऐसा नहीं, बच्चों को ऐसा लोभ का या मान का रक्षण करने के लिए नहीं, उनको तो वो प्योर है, और सामने वाला उनके जो डीलिंग कर रहा है वो प्योरिटी नहीं है ना, तो उनको गुस्सा आ जाएगा। बोलो हाँ क्या पूछा? तो मेरा लाइक मैंने जो आज आपको सवाल पूछा कि
लाइक सोचने से पाप लगता है या फिर मतलब कुछ भी असली में करता है, ऐसे सोच के असली में करना है पाप लगता है कि लाइक मेरी जो मम्मी है वो लाइक ऐसी है कि लाइक उनको हर चीज में पाप है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ वैसे ही फाइटिंग वाला है, कुछ वैसे ही देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं लाइक अभी तुम लोग ये देख रहे हो, अभी दिमाग में आएगा तो ये पाप लगेगा। अभी गेम खेल रहे हैं लाइक मतलब फाइटिंग वाला ऐसी, वो है इसको मारो, गेम में शूट करते हैं तो हाँ मतलब वही ऐसा होता है। तो लाइक मम्मी को बोलना है लाइक अगर दिमाग में है लाइक इसको मारना उसको मारना, तो भगवान ऊपर से पाप देता है कि लाइक अभी इंसान को मार रहा है, तो ना भगवान को पता नहीं खेल रहा है ऐसा। ना बोला पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मम्मी पाप डाल देती है ना, तो लाइक मैंने ये पाप कभी पूछा असली में ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मगर क्या है कि ये सब हेल्पिंग नहीं है, हेल्पिंग नहीं। इसलिए कुछ भी ऐसा हिंसा वाला है, हिंसा वाला गेम है ना, तो फिर आपकी वो मेंटालिटी ऐसी हो जाती है। इसलिए धीरे 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 वो मेंटालिटी हो जाती है। उनको लगता है कि ऐसा क्यों करता है, छोड़ कर दो उनको भी, ऐसा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। मगर एक समझने के लिए कि आपको अल्टीमेटली एंगर पे, प्राइड पे, ग्रीड पे, लस्ट पे, सबको कंट्रोल नहीं, सबको कॉन्कर करने का है, नॉट कंट्रोल, सप्रेस नहीं करने का है, सबको जीतने का है, इतना ध्यान रखने का। बराबर है। तो मम्मी से एक स्टेप आगे का बता दिया अभी। ठीक है, मुझे को लगा कि मम्मी को बोलेंगे नहीं, मम्मी बराबर नहीं है, मुझे एक स्टेप आगे का बताया कि सबको अल्टीमेटली यू हैव टू कॉन्कर all these are inner weakness, inner enemies, not outer enemies, inner enemies। और ये inner enemies अपनी हमारी जो शक्ति है ना, और inner strength को खा जाते हैं, और इसलिए उनको जीतने का है। तो जितने भी भगवान हुए ना, भगवान राम, महावीर, सब जीत के बैठे थे, उनको कॉन्कर करके। और अभी व्हाट इज योर सिचुएशन कि आपने तो आपके भीतर के दुश्मन को नहीं जीता है, मगर दुश्मन आपके ऊपर हावी हो गई। समझ रहे मेरी बात? ये दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसे आपके ऊपर हावी हो जाए तो मम्मी बार बार बोलेगी तो आपको गुस्सा आएगा, वो दुश्मन हावी हो गया। क्या मैं फिर भीतर बुद्धि जस्टिफाई करेगी, मगर मम्मी बार बार बोलते गुस्सा तो आएगा नहीं। मगर आपको इस क्रोध को कॉन्कर जीतने का है, उनको कंट्रोल नहीं करने का है, जीतने का है। इट्स अ बिग डिफरेंस, कंट्रोल करना और जीतना। कंट्रोल करे तो सप्रेस करके रखा, तो स्प्रिंग दबा के रखा, फिर कभी उछलेगा पता तक नहीं चलेगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो पूरा जो प्रेशर कुकर नहीं बनता है। अभी उनकी स्टीम रिलीज हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा जीत लेने का है। तो पक्का कर देना आ जाने का। पक्का। मैं भी पक्का कर देता हूँ। अच्छा, तू अकेला हुए तो भी कर देंगे। ठीक। हाँ, दूसरे कोई ज्ञान देने वाला नहीं है तो भी कर देंगे। ऐसा बता। हाँ बोलो। સેમ લાઈક આ લોકો ગેમ રમવા બેસે ને તારે રડતી હોય આજે કોઈ પણ કશી વસ્તુ રમકડા ખરીદવાની બાબતમાં ઘન જ પસંદ કરે તો એ અથવા તો કોઈ ગેમ રમવા જવાનું હોય ને તારે એક ઘનવાળી ગેમ જ પસંદ કરે તો એટલે હું પણ આવું કહેતી હોઉં ને તો એનું રીઝન જો આ કે તમે શું પસંદ કરો છો અને શું ગેમ રમે તો ટાઈમ જાય છે પ્રશ્ન કરો તમે વાતને જસ્ટિફાઈ કરો છો નહીં જસ્ટિફાઈ નહીં કરતી તો એ પ્રશ્નમાં આવું છે કે એ એવું કે તો તું કેમ આ ગન કેમ નાખે છે મને લેવાનું બરાબર અને આ ગેમ રમું છું તો તું મને કેમ ટોકે છે તો હું એવું કહું કે આ તારો ટાઈમે જાય છે અને જે વસ્તુ તું એ જે ગેમ છે ને એ ગેમ મારામારીની જ હોય છે એવું હોય ને એટલે હું એને રોકતી હોઉં છું તેની વાત કહું છું તો મેં કીધું કે એ આવું કરે કે મને તું રોકે છે કેમ તેના હાવી ખબર પડી ગઈ ખબર પડી ગઈ સાહેબ फॉलो क्वेश्चन दुश्मनों तुम्हें क्या तो जीतना कैसे दुश्मनों को जीतना कैसे है बहुत बड़ी बात है
जिम में जाने का रोज टाइकोंडो टाइकोंडो सुने मार्शल आर्ट अच्छा अच्छा हाँ हाँ એને કહેવાનું તું ટાઇકવોન્ડોનો ક્લાસ અટેન્ડ કર ઓટોમેટિક શાંતિ अच्छा 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 પેલું લડવાનું છે ને लातो है वो उधर ગાતું મરણ પણ ના. ડિસિપ્લિન ડિસિપ્લિન ओ ओके નથી ડિસિપ્લિન છે હા એટલે હું કઈ ભાષા બોલે એટલે આ શું છે અંદરના દુશ્મનોને પહેલા ઓળખ भीतर के दुश्मन को पहले पहचानना पड़ता है पहले तो हम भीतर के दुश्मन को पहचानते नहीं है ऐसा लगता है कि तो हमारे मित्र है मानो किसी ने आपका अपमान किया फिर सामने आपने भी रिटालिएट किया तो आपको क्या लगेगा अरे हर बार ऐसा करता है वो समझता क्या है उनको मैंने जो किया वो बराबर किया सही किया तो हम भीतर के दुश्मन को पहचानते तो नहीं है ऊपर से उनका रक्षण करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं तो भीतर के दुश्मन कब जाते हैं भीतर के दुश्मन अज्ञानता की वजह से खड़े एक सिंपल बात और दूसरी बात कि भीतर के दुश्मन कब जाते हैं तो भीतर के दुश्मनों को हम पहचाने और उनका प्रोटेक्शन नहीं करे तो भीतर जो पड़े हुए दुश्मन है ना वो धीरे निकल जाते मैं तेरे घर पे आया और तू मुझे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेगा तो मैं 10 दिन रहने वाला तो एक दिन में चला जाऊंगा 2 दिन में चला जाऊंगा ऐसे हम भीतर के दुश्मन को ट्रीट देते हैं तो अच्छी तरह ट्रीट नहीं करेंगे ना वो भी चले जाते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है कि ये घर में रहने जैसा नहीं है मगर हम उनका रक्षण करते हैं समझ आ गया अभी बात समझ आ गई ना मैं तो आगे सर हाँ। कि आपको गुस्सा आ गया कितने हैं आपको कितने बच्चे एक ही है अच्छा एक है तो फिर किससे झगड़ा करेगा मेरे साथ करता है ना वो। हाँ बराबर तो बराबर है दूसरा तो एक समझने के लिए कि हम ये जो भीतर है जो भीतर का दुश्मन आपको किसी पे गुस्सा है आपको एक फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आ गया और फिर मम्मी बोलेगी कि हर ऐसा किसी पे गुस्सा मत करना उनको अच्छा नहीं लगेगा उनके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगेगा हमारा रिलेशन नहीं रहेगा तो आप क्या बोलेंगे अरे वो ये बार बार मुझे ऐसा इंस्टिगेट करता है तो फिर क्या होगा मुझे गुस्सा तो आएगा नहीं ये क्या हुआ कि आपके भीतर जो क्रोध पड़ा है जो दुश्मन पड़ा है उनकी फेवर की उनका प्रोटेक्शन किया इसलिए आपने अच्छा ट्रीट किया तो आपके घर में बैठा रहेगा वो जाएगा नहीं छोड़ के तो ऐसा होना चाहिए तो अभी भले सब भरा हुआ माल है मगर सभी माल को हम पहचानते हैं कि दुश्मन है दुश्मन है दुश्मन है उनका प्रोटेक्शन नहीं करते उनके लिए भीतर पिंचिंग रहता है कि कब जाएंगे तो फिर वो निकल जाते। आपने बोला ना कि लाइक दुश्मनों को भी लाइक अगर माफ कर देना या उनके लिए भी ये बाहर के दुश्मन को भीतर के नहीं आउटर एनिमी अच्छा आउटर नॉट इनर एनिमी अभी जो बोला ना वो इनर एनिमी के लिए बोला अच्छा। पहले जो बोला वो आउटर एनिमी के अच्छा लिए वो बोला। क्या मैं अभी जो बात बोली हाँ। वो भीतर के दुश्मनों की बात है अच्छा तो उनको आप आपको ऐसा कर लेते कभी मम्मी ने खाना बनाया आपको पसंद नहीं आता है ऐसा होता है कभी कभी वो करेला की सब्जी बनाती नहीं बनाती मतलब समटाइम आपको तो अच्छा पसंद है करेले नहीं मुझे नहीं पसंद नहीं, तो नानी की स्टाइल पसंद है उनका अलग स्टाइल है हाँ बराबर है नानी के पसंद है तो पसंद नहीं है वो बनाती तो क्या खाना तो पड़ता है हाँ, तो क्या करने का थोड़ा खाने का चिल्लाने का नहीं थोड़ा खाने का ज्यादा नहीं लेने का और फिर खुद से बात भी करने का अरे ये तो बहुत करेले की सब्जी है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है ऐसी बात भी करने का तो फिर वो पसंद नहीं तो फिर प्रेम से खा रहे टंग टॉलरेट नहीं करता तो स्ट्रॉन्ग है और माइंड को सही बात है। अच्छा ये बिटर टेस्ट है ऐसा लगता है ना
मगर क्या है, वो कुदरत का नियम कैसा है कि करेला की सब्जी नहीं खाएंगे तो जो बीटा रस भीतर जाएगा नहीं ना, तो फिर डॉक्टर मेडिसिन लिख के देंगे, वो खाना पड़ेगा। वो बीटर उसमें भी आ जाता है, तो इसलिए सीधा नेचुरल खाते हो अच्छा नहीं। हाँ, और मम्मी भी खुश रहती है, चलो उसे खा लिया। पर ज्यादा नहीं खाएंगे तो बार बनाएगी। This is for all kids, okay? Everyone can listen. करेला की वो तो सब्जी। सब समझ जाते हैं। They हाँ, करेला. થોડી પછી ફરી જમા વેચી જાય પણ हाँ तो वहां तो बहुत कर और इनका नाम क्या है? इन्होंने एक शब्द भी बोला ऐसा। एक शब्द नहीं बोला। मेरा नाम पता है, आपका ये केशव आनंद जी और मेरा भरत आनंद जी, और हम दोनों दादा भगवान को मिले थे when we were in school, college at that time. और फिर दादा भगवान मिले तो फंस गए, फिर फंस गए, ऐसा हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि फंसने की जगह ध्यान रखना, मम्मी को बोल के रखना कि थोड़ा मुझे फंसते जो ऐसा रखना। अच्छा। इनको दो अभी बात करने के लिए। कैसे सब नहीं बोला जाता है ताकि वो लिंक टूट नहीं जाए, अच्छा। क्योंकि ये जो बोलेंगे वही मैंने सुना है दादा के बारे में, तो मेरा भी सेम ही निकलेगा, पर वो लिंक टूट जाती ना, तो इसके लिए वो प्रवाह को नहीं डिस्टर्ब नहीं करते। ओके, सर। हाँ, तो अच्छा है, आपने बोला कि मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। चौखट है। वो शब्द नहीं सुना ने, मगर वो साथ में बैठे हैं ने, तो हेल्पिंग हो जाते है। हम आप तो कैसे है, हम ऐसे बैठे हैं सत्संग करने के लिए, तो मान लो कि वो बोलते हैं ने, तो ऐसा उनका निकलता रहता है, निकल ले देने का। बाद में कुछ ब्रेक आगे बोलते ठीक है अभी आप कर लो, तो मैं कर लेता हूँ। ऐसा मेरा भी ऐसा है, तो आपको जैसे डिफिकल्ट प्रश्न करके मुझे नहीं आएगा तो मुझसे सीनियर है तो उनको दे देता हूँ कि आप आंसर दे दें। और हमारा क्या होता है, हम एक दूसरे को हेल्पिंग है, तो ये जब आपको समझाते हैं ना, तो हम भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो हम उस समय दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो भरत आनंद जी बोल रहे हैं वो उनको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाए, तो ये हमारी हेल्पिंग होती है। तो ये दादाजी ऐसा बोल रहे सिर्फ साथ में बैठे ना बहुत हो गया। तो हम 4-5 है ना, अभी तो 2 है, तो इंडिया में कभी कभी 5 हो जाए, 6 हो जाते हैं। 6 एक साथ तो बात नहीं कर सकते, एक ही बात करता है ना, तो बाकी सब इस तरह से हेल्प करते हैं। उनको भीतर ऐसा नहीं होता है, जनरली बाहर कैसा होता है कि मेरा टर्न कब आएगा, नहीं वेट करते। तो हम दोनों ऐसा नहीं है, तो विचार तक नहीं आता है। उनको सुनने जैसा है, क्योंकि बहुत उनकी बातें बहुत दादा की सारी बातें सब करेंगे, ऐसा वो हलवा की तरह अंदर आपके भीतर चली जाएगी, आपको ज्यादा चबाना भी नहीं पड़ेगा, सीधी उतर जाएगी इसी। और दादा भगवान की सेवा भी बहुत की है, जब छोटे थे ना कॉलेज में तभी सब की, अभी तो बहुत बड़े हो गए, 70 इयर्स हो गए। तो तुम सोच कितने साल पहले दादा मिले होंगे? 20 years के कॉलेज 18-19 मैं वही बोल रहा हूँ कि 50 साल तो हो गए ना दादा को मिले। हाँ, कितने सीनियर है कि नहीं है। सुबह સ્કૂલમાં હતા ને જ્યારે તમે દાદા ભગવાન એસએસસી પાસ કરેલી અને ફર્સ્ટ યર કોલેજમાં જતા ત્યારે ग्रेड 12 में એટલે वो 50 वर्ष થઈ ગયા ને, वो सब ग्रेड 11 था ना, एक हाँ, ग्रेड 11 11 तो जूनो एसएससी જૂનો એસએસસી ओल्ड एसएससी 11 11 ધોરણ લાસ્ટ પછી કોલેજ સ્ટાર્ટ 75 થી આવ્યું ન્યુ એસએસસી. So 18 years old? At his age, હા 16 16. कोई बात नहीं। अभी दूसरा कुछ पूछना है, नहीं, पूछ लो ना, अभी टाइम है, मुझे टाइम पास करने। सर दादा नो अंत समय आई मीन एक
કેવી રીતે મતલબ એમના ઘરમાં જ હતા કે થોડોક આ દાદા છે ને તે એમના ઘરમાં એટલે દાદાનું પોતાનું તો ઘર હતું નહીં. दादा का खुद का मकान ही नहीं था. वो तो रेंटेड हाउस था. वो तो हीराबा का देहांत हो गया, बाद में वो दे दिया था उनको. वो कुछ ऐसा 10 रुपीज ऐसा रेंट था उनका. तो मकान मालिक को तो ऐसा वो देंगे ही नहीं. तो हीराबा का देहांत हो गया, फिर 15-20 दिन के बाद उनको दे दिया. तो फिर रहते थे वो रसीद भाई थे, रसीद भाई के वहाँ, चंद्रकांत भाई के वहाँ सब रहते थे. तो लास्ट में वो रसीद भाई के वहाँ थे. तो क्या था, एज 80 की एज हो गई थी. और जो पहले 1 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह थोड़ी वीकनेस भी आ गई थी. हाँ, दादा. हाँ, नहीं पता है आपको ऐसे चीज. मैं बहुत छोटी थी तभी जब दादा भगवान आए थे. हाँ, 10 years की 10 years की थी मैं तभी. हाँ, बराबर. अरे इससे ज्यादा पता नहीं. तो फिर दादा वहां ही थे घर पे, और उनके ऐसा थोड़ा हेल्थ का थोड़ा प्रॉब्लम था. तो लास्ट में तो कफ वफ सब हो जाता है. वो तो संजोग तो कुछ भी होता है. तो फिर सब लोग सोचते थे कि दादाजी को आईसीयू में डालो, ये हॉस्पिटल में लेके जाओ, ये करो वो करो. दादा ने बोला भाई मुझे कहीं जाना नहीं. अच्छा. फिर लास्ट में उनको सत्संग का वो सब बहुत था. तो लास्ट में जो थोड़ा ऐसा सांस की वजह से वो रहता है ना, तो फिर तो थकान भी थी. तो ऐसा बोला कि चलो अभी सत्संग में जाते हैं. फिर ऐसा टर्न होके सो गए. फिर सुबह में बात फिर शांत हो गया. ऐसा घर पे ही थे. At the age of 80. ये कौन सा था? 88 जनवरी. कितने उम्र थी तेरी उस समय? मैं 7 साल की थी 88 में. हाँ, 7 साल. हाँ, तो बराबर. तू पहले 10 बोलो ना, मुझे कोई सोचने पड़ेगी. 5 દિવસ રાખ્યા હતા દાદાને. મેં તો દર્શન કર્યા હતા ગોળ પર, બરફના પહાડ ઉપર. હા, तू नानी कहती? હા, હું 10 વર્ષની જ હતી. हाँ, हाँ. તો પપ્પાને એક સારું હતું, અમને બધાને લઈ જ જતા હતા. ના એટલે પૂછતા જ નતા કે આવું છે કે નથી આવું. હા, લઈ જ જતા હતા. એ તો પૂછવાનું હતું જ નહીં. ઘરે છોકરા રહે જ નહીં. એટલે કોઈ મરી ગયું હોય ને તો આજુબાજુ વાળા કે, એટલે બાજુ વાળાએ કહ્યું હતું કે છોકરા મૂકીને જાઓ. પપ્પા કે ના, જોડે જ, બધા જોડે જ. એટલે અમે તો બધા જોડે જ હતા. દાદાનો દેહ વિલેજ થયો ને, હા. એ જે ત્યાં રાખેલું ને, એટલે અહીંથી અમેરિકા મહાત્મા આવવાના તો બોડી રાખેલું. અને એ વખતે તો આપણું મોર્ચ્યુરી બધું એવું બધું હતું નહીં. એટલે શું કર્યું, બરફની 3-4 પાટ લઈને એની પર બોડી મૂકી દેવું. એટલે પછી પણ બધા આવે ને આમ કન્ટિન્યુઅસ નોન સ્ટોપ બધા દર્શન કરવા આવતા હતા. તો કોઈ ગયા છે દાદા મોટી બોલો નહીં તો આને અહીં બેસાડો, બધાને સંભળાતું નથી. ઓહો, ના વાંધો. દાદાના દેહ વિલય પછી કોઈને એવું નતું લાગતું કે દાદા ગયા છે. બધા એવું લાગે દાદા છે. અને દાદા દર્શન કરવા આવે ને બરફ પર સુવાડેલા, તો એ કોઈને એવું લાગે ને કે દાદા નથી. એમ એને એવું લાગે આમ દાદા આમ જીવતા બેઠા છે, જીવતા સુતા છે. ત્યાં સુધી આપણે આમ કે માખી વાખી બેઠી હોય ને તો આપણે કોઈ માણસ પર બેઠે કેમ ઉડાડીએ, એમ એવું આમ દાદા બેઠા હોય, દાદા જીવતા છે ને કેવું એટલો પ્રેમથી એને ઉડાડે. એને એવું લાગે ને કે દાદા નથી. એટલે એ વસ્તુ બહુ મોટું આશ્ચર્ય હતું કે દાદાને ગયા પછી કોઈને એવું નતું લાગ્યું કે દાદા નથી. હાલી તારીખમાં તમે બોલો છો ને તો એ સ્મૃતિમાં જતું રહેવાય છે. એ જગ્યા બધું દેખાય એમ. એ દાદાનું બોડી પણ આખું આ બરફ પર મૂકેલું પણ છેક સુધી સોફ્ટ હતું આખું. હા, તમને આવો પ્રશ્ન કર્યો આમ નથી. દાદા ત્યાં
એ બાજુ બધા આવેલા ને રાજસ્થાનમાં, ખાસ તો પહેલી વખત ત્યાં આવેલા પેલા જુગરાજીને ત્યાં Okay. જાત્રામાં ગયેલા ને તો જુગરાજી લઈ ગયા. પછી આ બધું ચાલુ થયું બધું. પછી આ સુરત મંદિરનું થયું ને એમાં એ પેલા પછી પેલા એક પંડિતજી આવતા હતા. તને ખ્યાલ નહીં. ક્યાંથી? રાજસ્થાન? હા. Okay. દાદાને બધા હતા એમ સાથે જ બધા આવતા હતા. એટલે બધા જૈન સાધુઓને શીખવાડતા હતા. ઓ તો રાજમાજી તો નહીં, એ મારા દાદા હતા. એ ના. સાધુઓને શીખવાડતા હતા એ. હા એ શીખવાડતા પણ એમની જોડે બીજા પંડિતજી આવતા. ઓકે. ચંપકલાલજી? હા ચંપકભાઈ. ઓકે. સુસાગર સામે રહેતા હતા એક ના બીજા. રાજસ્થાન શિવગંજથી? શિવગંજ. હા તે ચંપકલાલજી. ચંપકભાઈ. તો એ બધા આ બધું હતું જૈન, પણ જે રીતે દાદાનું ચોટી કર્યું ને બહુ મોટું આશ્ચર્ય હતું. બાકી જૈનોને ચોટે નહીં. ચાલો તો તમે બધા પ્રશ્નો બાકી રહી ગયા ફટાફટ થઈ ગયું. एक्सप्लेन करना करो ये खबर है હા તારા ફાવે તે એક્સપ્લેન કરતે ને આઈ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ. दादा भगवान केम चूजन बोला था ज्ञानी पुरुष बनवा कोई बीजू पण હા હા વેરી વેરી ટ્રુ બહુ સરસ ગુડ ક્વેશ્ચન. હી ઇઝ આસ્કિંગ ઇટ આપ દાદા ભગવાન જે ખુલ્લા થયા તેમ એમને જ કેમ ચૂઝ કર્યા, બીજા કોઈને કેમ નહીં? સાચી વાત છે. જો હું તને સમજાવું, દાદા ભગવાનને at Surat railway station in 1958 he was sitting on platform number 3 and it was evening time અને એ બેઠા હતા ને તો અંદર જે ભગવાન ખુલ્લા થયા ને તો એ એમ પટેલે ભગવાનને કીધું કે why you are getting unveiled here? There are so many human beings in this world. Go somewhere else. અહીંયા શું માટે શા માટે થાવ છો? તેમને તો ભગવાનને ખખડાવ્યા હતા. તમને ખબર ભગવાન અંદર ખુલ્લા થયા એ પ્રોબ્લેમ ને પછી બધા દર્શન કરવાના બધા આપણું કશું કામે ના થવા દે. દાદાએ કીધું તો કે અંદરના ભગવાને કીધું કે આ કલયુગમાં અમને આટલી પવિત્ર પ્યોર એટલે કે જેની અંદર એન્કર ના હોય, પ્રાઇડ ના હોય, એટેચમેન્ટ ના હોય, ગ્રીડ ના હોય, એવું કઈ જગ્યા મળવી જોઈએ ને એટલે કે અમે તમને ચૂઝ કર્યા. સમજે? તો દાદા પણ કેટલાય પાસ સો મેની બર્થ એમનું જે ફોકસ પોતાના ઉપર હતું એટલે આમના મન વચન કયા એકદમ પ્યોર થઈ ગયા. એટલે એટલા બધા પ્યોર થઈ ગયા કે ભગવાને પછી એ જ જગ્યા ચૂઝ કરી ખુલ્લા થવા માટે. આમ ગુજરાતીમાં કહું ને, જોરથી બોલજો, થોડું જોરથી બોલજો, નહીં સમજ. ગુજરાતીમાં કહું ને દાદા કે 1958 જે મય ભગવાન ખુલ્લા થયા ને તો અમે તો કે ભગવાનને કહ્યું કે આ દુનિયામાં આટલા બધા માણસો છે, બીજે જાઓ ને અહીંયા શું કામ પ્રગટ થાવ છો? ત્યારે ભગવાને કેવું કીધું કે આટલી પ્યોર જગ્યા અમને મળવી જોઈએ ને કે. એટલે આ એમની પ્યોરિટીની ખુમારી હતી, અહંકારની ખુમારી, પ્યોરિટીની ખુમારી. આવો પ્રશ્ન કર્યો. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સમજાયું ને? Krupa also had it. The same question Krupa had. Why Dada only chosen for this man? Why બરાબર. not nobody else? So you understand? And then she was asking why Ranchod Dada was that same time and why so that. ના બરાબર. તો કે આપણે બધા જોઈએ ને તો બધાની અંદર એંગર હોય કે ના હોય? પછી બધાની અંદર બધી ડિઝાયર્સ હોય કે ના હોય? અહીંયા ફરવા જોઈએ છે, અહીંયા ખાવું છે, આ કપડા જોઈએ છે, આ ગાડી જોઈએ, આ સાયકલ જોઈએ છે, આમ જોઈએ છે, આ ગેમ જોઈએ છે, આ ખાવા પીવાનું છે, બધી ડિઝાયર્સ બધું હોય કે ના હોય? તો દાદા એવા હતા કે અમને અંદર કોઈ દાદી ડિઝાયર એટલો અંદર આનંદ હતો ને કોઈ ડિઝાયર્સ હતી નહીં. તને તો ખાવાની ઈચ્છા ક્યારે થાય? Desired now I think human choice. હા પણ એ જ છે, એ જ મોટી વસ્તુ છે. હા એ જ ના, બહુ સાચી વાત છે કે ડિઝાયર ના હોય તો હ્યુમન કઈ રીતે કહેવાય? બરાબર છે કે પ્રાણીઓને ડિઝાયર ના હોય, એમને ખાલી 4 સંજ્ઞા જ હોય. ક્વેશ્ચન એકદમ સાચો છે. સમજે? ના બરાબર. એમને કેવી ડિઝાયર હોય કે આ ખાવાનો ટાઈમ થઈને ભૂખ લાગે એટલે એમને થાય ચાલો જમી લઈએ એટલું. પણ તને કેવી ડિઝાયર હોય કે ખાવામાં પાસ્તા બનાવ તો સારું.
क्या पिज्जा होता સારું આ રોજ क्या કારણ શાક બનાવ્યું થાય ને એવું કશું એમને ના થાય ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક ડિફરન્સ પેટ ભરેલું પણ હોય તો આવું કઈ જોઈએ તો ભૂખ લાગી જાય પછી. હા હા સાચે પેટ ભર્યું તો આવું કઈક આમ ગમતું છે આમ રોટલી ખાવા તો એક જ કે બે ખાય ને જો પિઝા તો 3 પીસ ખાઈએ બરાબર એટલે પિઝા માટે જ આવ્યા છે ભાભીન ઘરે લાલા મામાએ કહી દીધું હતું કે તારું ફેવરેટ છે એટલે આ લોકોએ ચારેય નક્કી કર્યું છે કે આપણે જવાનું જ છે ઘરે રહો આજે ના કે આજે તો જવાનું જ છે બીજાના ભાગ્ય ખુલ્યા. તને ક્યાં પિઝા ભાવે कौन सी वेरायटी कई वेरायटी चीज पिज्जा વેજી જે આપે ખાવાનું ड्रेसिंग पिज्जा जो है મારે એવું છે પિઝા મળે છે બધા એમાં જ હતા ખાવા માટે જ જતા હતા હા એ તો અમે એ જ એમાં જ આવીએ સવારમાં જ પણ આ તો કહું છું પણ જો ને એક વસ્તુ છે એ ભલે પિઝા માટે આવ્યો પણ અહીંયા 2 કલાક બેઠો કે ના બેઠો 2 કલાક સત્સંગની વાત એ બધીને સાંભળી કે ના સાંભળી અને પ્રશ્નો પણ ક્યારેથી નથી કરતો એટલે કે આમાં જ ઇન્વોલ્વ છે ને આજે જ મને કહે છે કે સત્સંગ ક્યારે છે આપણા ઘરે મેં કીધું બુધવારે કે ગુરુવાર નક્કી કરીશું એટલે કે ગુરુવાર રાખો તો નિષ્ઠાન કૃપા આવે મેં કીધું સારું गुरुवार રાખો हाँ बोल एक क्वेश्चन है इंडिया का सबसे पहले गुरु महाराज कौन लाइक सबसे पहले लाइक किंग्स के टाइम से पहले लाइक कोई गुरु सबसे पहले कौन है गुरु महाराज जिन्होंने गुरु महाराज शुरू किया ऐसा कैसे होता है ये तो कितने सालों चलते ही रहते हैं भगवान महावीर हो गए तो भगवान महावीर के पहले दूसरे 5-7 भगवान हुए उनके पहले दूसरे ऐसे शुरू में ऋषभ देव हो गए फिर उसके पहले उसकी दूसरी 24 आ गई ऐसे वो चलता ही होता रहता है अच्छा तो पहले जैसा नहीं है सबसे पहले गुरु महाराज जैसा नहीं होता अच्छा मानो ये सिख धर्म है तो ये गुरु नानक साहब वो शुरुआत हुई हाँ। उसके पहले सिख धर्म नहीं था हाँ। क्योंकि सिख धर्म हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया ना हाँ। तो उसके पहले वो नहीं था वो क्या है कि एक टाइमिंग ऐसा संजोग ऐसा हुआ इसलिए वो बनाना पड़ा तो ऐसा है तो वहां होते तो वहां भी उन्होंने क्या किया वो 10वें गुरु हुए फिर बाद में बोले अभी कोई नया गुरु नहीं अभी ग्रंथ साहब ही गुरु क्यों ऐसा बताया क्योंकि एक कलयुग में लोग इतने प्योर नहीं हो सकते थे गुरु इतने प्योर नहीं हो सकते इसलिए फिर ग्रंथ साहब को गुरु बना के रख दिया हमें फिर अभी जो है वो ग्रंथी वो पढ़ते सुनाते इतना मतलब उनको गुरु नहीं बोलते ग्रंथी बोलते वो क्या करते हैं ग्रंथ साहब का है जो गुरु है हाजिर है ऐसा विनय करते हैं मगर कभी क्या हो जाता है किसने विनय नहीं किया कोई नहीं जानते विनय नहीं किया तो भी उनको गुस्सा आ जाएगा नहीं कुरान मां करे ये सब पहले जैसा नहीं है दादा भगवान थे तो दादा भगवान के कोई गुरु नहीं थे उनको बट नेचुरली ज्ञान हुआ और जनरली सबको गुरु के पास से ज्ञान मिलता है बोलते हैं गुरु के बिना गम नहीं तो सबको गुरु के पास से ज्ञान मिलता है पर दादा भगवान को कुदरती हुआ बट नेचर हुआ तो उनको ये जन्म में कोई गुरु नहीं थे तो स्वयंभू ये ज्ञान हुआ तो स्वयंभू ज्ञान बहुत रेयर होता है कभी कोई तीर्थंकर भगवान को होता है बाकी नहीं होता है तीर्थंकर भगवान जीते हैं वो स्वयं बुद्ध होते स्वयं बुद्ध स्वयं बुद्ध ऐसा बोल अच्छा है ऐसा प्रश्न करता तो अच्छा है वो लगता है यहाँ इसीलिए प्रश्न पूछ सकते हैं आराम से बात कर सकते लगता है ना सर पहले था मम्मी के साथ ही बात कर सकते ऐसा लगता था अभी तो लगेगा नहीं यहाँ सब प्रश्न कर सकते तो इसने भी कितना अच्छा प्रश्न कर दिया मैं तो खुश हो गया प्रतीक जी क्या पाचर अच्छा કારણ અત્યાર સુધી પ્રશ્નો એ કરતી હતી એ ટાઈમે આખરે એક પ્રશ્ન જ નથી કર્યો અને આને પહેલી વાર પ્રશ્ન કર્યો એવો જોરદાર કર્યો વિચારવા પડ્યું
તો પ્રભુ દાદા ખુશ થઈ ગયા. હા હા પ્રસન્ન હા. પ્રશ્ન છે હા આરતી વિધિ કાં તો સ્પેશિયલી ચરણ વિધિ કરતી વખતે ધ્યાનપૂર્વક કરવું હોય, ઉપયોગપૂર્વક પ્રાર્થના પણ કરીએ, પણ મન બતાયા જ કરે બીજું બધું અને ધ્યાન જતું રહે. લાઈક કેટલી વખત એવું ખબર પડે, પાછળથી ખબર પડે કે વિધિ કરતા હતા પણ 10 મિનિટ કશું બીજું જ વિચારતા હતા, અહીંયા મોઢેથી ખાલી શબ્દો નીકળતા હતા, પછી પાછું ધ્યાન આવે. સો એના બેનિફિટ, ડ્રોબેક્સ અને સોલ્યુશન કેવું હોય, એક તો નક્કી કરવું પડે, નક્કી કરવું પડે કે મારે ઉપયોગપૂર્વક આ વિધિ કરવી. બીજું શક્તિ માગવી પડે. શક્તિ કોની પાસે માગવી પડે? જેની પાસે હોય એની પાસે. એટલે કે દાદા ભગવાન પાસે શક્તિ માગવી પડે કે હે દાદા ભગવાન, મને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક આ વિધિ કરવાની શક્તિઓ આપો. ખ્યાલ? હવે તું જે શક્તિ માગે ને તે તારો અહંકાર તો માથું ના આવશે. તું કોની પાસે શક્તિ માગે? જેની પાસે હોય એની પાસે. તારી પાસે નથી એટલે અહંકાર માથું જ કે સમજાય? કે અહંકાર અહંકાર એટલો ધોવાયો અને આ નક્કી કર્યું છે કે મારે ઉપયોગપૂર્વક વિધિ કરવી છે, એટલે જેવો ઉપયોગ ખસે તને જ દેખાય. કારણ કે હજી તો પાછળમાં પહેલી પૂરી છે ને, એટલે ઉપયોગ ચૂકી જવાય. પણ આ નક્કી કરેલું છે કે મારે ઉપયોગપૂર્વક વિધિ કરવી છે, એટલે જેવો ઉપયોગ ચૂકાય એટલે દેખાય. આ નક્કી કર્યું છે, આપણે શક્તિ માંગીએ છીએ અને પાછું ઉપયોગમાં નથી રહેવાતું એના માટે માફી માંગીએ છીએ. પછી એ મારે ને કિન્નરી જોડે જોબ કરે છે. અચ્છા. થોડું અમાર બેન સારું ફાવે છે. ઇંગ્લિશ એકલું જ આવડે છે. મોરિશિયસ. Mauritius. Mauritius, there are so many Hindu families. Yeah, my husband is Hindu. Oh, your husband is Hindu? Mauritius પર આપણે જઈએ ને તો બધું કૃષ્ણ શંકર એટલે બહુ આખું ઉભું કર્યું. So if you want to ask anything, you feel free. This is interactive discourse. So you have to ask. We will not tell you anything, but when you will ask, we will give all answer. But feel free. Thank you. So your husband is Hindu? Yeah. But he is a good man? But he's dominating in the family as a head of the family. Yes, he is the head of the family. As a head of the family, ne? But you know, your husband is the head of the family. Yes. And you are neck of the family. So without neck, head can't do anything. So that way you keep your balance. But when you feel that, oh, he is head, then your ego will get hurt. And when you realize, no, I am neck and he is head. So head can't do anything without neck. अभी समझ में आया? हाँ, ये सब ध्यान मुझे अच्छी तरह हाँ, अच्छी तरह. So what is your first name? Anne. Or N? पूरा मतलब नवा है नाम. So and you want to be happy in your life? Or you are happy? I'm happy. You are happy. Good. Very good. That's a good answer. I am happy. When you say I am happy,
your in your inner conscious, that positive effect will be there. Yes, that's true. And when you say I have this problem, that problem, then it will multiply. Yeah. So good thing, good answer. I like. Have to think positive, not negative things. Huh. Yes. Always positive. Yes. When it's bad, you have to say it's good. Even if some difficult situation is there, then also we can remain happy. Yes. Say you are doing job and you don't get promotion, then how you remain positive? Well, if you're not even you're not happy, you will get promotion. They have to, accept it the way it is. Maybe God's, don't want it. So you try again next time. You try. Yes. Can't do anything, You just have to think positive. Maybe next time is my chance, but not this time. Maybe God don't want me to do this time. Maybe next time will be, Yeah, correct. Right. This is okay, perfect. In this way you can remain positive. Okay, next time my chance. Or God has more doors that it can open for us. That we can go here or here. You can. But you are sometimes fighting with your husband? No, not really. No, Not really. Very good. But because my husband is in the yoga, and I'm following yoga too, and I attend so many classes in Swami. So I am. So you are doing yoga? Yes. Oh, so you are teaching yoga? No, I'm not teaching yoga. I'm practicing, So yoga keeps your mind. Yeah, I'm following, Swami. I don't know if you heard of Yogananda. Hari Yoga. Swami Krishnanand, Mauritius, in Mauritius, long back. Swami Krishnanand. Krishna, I don't know really. I lost a long time ago. But before 50, 60 years, some Prasthana Swami, he started all this thing in Mauritius. That's good. Your understanding is good. So your husband is lucky. Yeah. Thank you. But you like Bina's nature? She is working with Kinnari, and sometimes very few days working with me, but most of the time with Kinnari. How is Kinnari? Good. Is it? She's very good. Very good. What good? Very good. Very good. Helping. Yes. And always happy. Yes, and quiet. Quiet. Never complaining. No. That's a good thing. You are not complaining, you are quiet and you are happy. It's a good quality. And what about me? She's also happy, but not quiet. This one when she's magic though, very loud voice. Already when Yeah. Bella is upset, she just Yeah. મહેશભાઈ પપ્પા વખત આવતા હતા ને તો અમે રોજ કીર્તન ભક્તિ કરતા હતા તો એ આવતું હતું અને બહુ ગમતું હતું કે છે સમથિંગ ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ. So, our session now it is ending. So, we will do that chanting. Okay. You remember that Dada Bhagwan Asim Jayakaro? No, It's a unique chanting in the world. When you chant that Dada Bhagwan Asim Jayakaro, the frequency that it creates, it will nullify the negative frequency that is going in your inner consciousness. So you will feel happy even if you don't understand what I am chanting. But in our language, it means when we are chanting Dada Bhagwan Asim Jayakaro, means we are chanting, we are worshipping the God within us. So and you can also chant like that. You are worshipping Dada Bhagwan means God within you, the true self, pure soul within you.
You can understand that thing. There are two things in this world. This packing part, one temporary and one permanent. So N is temporary and the spirit within, the pure soul within is permanent. Yeah. And yoga is to connect temporary and permanent. And yoga have 8 steps. But simple way, there are two things in this world, one temporary and one permanent. As an N, you are temporary. And what is goal of your life? To realize the permanent within. To realize the God within. That is the goal of your life. So today when you go home, you tell your husband, what is the goal of life? You ask him. And then you say, if the goal of the life is to realize our true self. Why to realize? Because true self is permanent and having permanent happiness. Its inherent nature is permanent happiness. And in this world, we are having temporary happiness. And from temporary, we want to go that state, permanent happiness state. And for that, we are singing Dada Bhagwan Na Asim Jai Jaikar Ho. Okay? So we'll do it. So you know very well. So you can do it now. Chalo, kon dodwaje. સૃષ્ટિ. સૃષ્ટિ કે હા. 8 મિનિટ દોડાવીએ. બોલો મોડું થાય એને ત્યાં ફાયદો થાય. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. જય સચ્ચિદાનંદ. ચલો આવી જાઓ વારસો. વારસો દાદાના, વારસો દાદાના. સુરવીર તારે લાવજો, સુરવીર તારે લાવજો. કાયર બનો ના કોઈ દી, કાયર બનો ના કોઈ દી. કષ્ટો સદા કંપાવજો, કષ્ટો સદા કંપાવજો. હે સિંહના સંતાનને, રે સિંહના સંતાનને. શિયાળ તે શું કરી શકે, શિયાળ તે શું કરી શકે. મરનાંત સંકટ મેં કહે, મરણાંત સંકટ મેં કહે. એક એકના ઘરનાર છે, એકના ઘરનાર છે. જગતભરના સત્પુરુષોનો યોગ બળ, જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ. જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ, જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ. અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ, અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ. આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. આખા જગતનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો. અને તેનું નિમિત્ત બનવાની, અને તેનું નિમિત્ત બનવાની આમ સૌ મહાત્માઓને, આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.